Good morning, Monica, Karan, Vidhi, Ashwini, Nishu, Muhammad, Sharma. Am I audible? Is the voice clear? Online students, am I audible? All right. कैसे हैं आप लोग? Give me briefly your background. How many of you are science students? How many of you have studied economics in your graduation? You have studied. Have done your masters or just a graduation? What? One sem only. How many of you are engineers? All right. ठीक है. All right, Debarga. See, we now have to start the first major topic, which is covered in your NCERT, beyond page 24, NCERT class 12 macroeconomics. It is also a topic covered in the Tamil Nadu board books. So right now I'm going to give you first the sources from where you have to study economics now. See, primary, we are done with the introduction. I have opened the subject for you. We have started our first topic, that is sectors, जिसमें आज हम will cover the topic of growth. तो growth का जो topic है, it is very important, growth and its measurement. Once we are done with this topic, then only we can understand the concept of development, which is in your economic geography as well as in your geography optional paper 1. So economic development का concept makes sense only when you study the concept of economic growth. इसीलिए growth and development is a clubbed topic. So first of all, today we'll cover the entire aspect of growth. इसका सब कुछ हम cover करेंगे. Mostly important for your prelims examination. तो उस हिसाब से देखेंगे. Now see, where do you study this topic now? From where? Primarily, as I've told you, go for NCERTs, class 11, class 12, but class 12 का सिर्फ macro portion. You get the PDF of this book. See if you can, connect with the book. If you feel like it's very difficult to understand, then wait for some time. Wait for me to cover the topics. Then you can shift to studying the book. For example, जब आप पेज 24 ओपन करोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, यू विल फिगर आउट कि वहां पर जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें यू हैव अ टॉपिक ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग. इफ यू हैव स्टडी नेशनल इनकम अकाउंटिंग, आपको पता चला होगा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं विच आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट. सो वेट फॉर मी टू कवर नेशनल इनकम अकाउंटिंग, देन गो टू स्टडी दैट टॉपिक. यू विल फील दैट आपको आराम से सब कुछ समझ आ रहा है. देयर आर पोर्शंस इन दिस बुक दैट नीड नॉट बी कवर्ड. जैसे जहां पर भी यू सी लाइक देयर आर इक्वेशंस, देयर आर ग्राफ्स, देयर आर some technical data that is given, you can entirely ignore it. Why? Because we have to use new updated data from the economic survey. तो कुछ portions है इसके जो आपको totally ignore करना है. If you don't find it like amusing, then what you should do is you should go for Tamil Nadu board books, class 11, class 12. Again, this class 11, class 12 Tamil Nadu board book, you do not have to study it cover to cover. जो टॉपिक मैं क्लास में उठा रहा हूं, द टॉपिक दैट आई एम टीचिंग इन द क्लास, यू स्टडी दैट टॉपिक फ्रॉम द बुक इटसेल्फ. बस डोंट स्टडी द एंटायर बुक. इसमें काफी सारे चैप्टर्स है दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो जैसे मैंने आज नेशनल इनकम उठाना है, यू विल फाइंड अ चैप्टर ऑफ नेशनल इनकम इन द बुक. जस्ट स्टडी दैट चैप्टर ओनली. बाकी कुछ फिलहाल के लिए छोड़ दो आप. Once you're done with this basics, then you have to get one more book, which is I don't know the exact, it was Pearson publication. Pearson की आपको बुक मिल जाएगी इंडियन इकोनॉमी पर.
Pearson publication. Either get that book or get Nitin Singhania. Both of them are very good. Take one of them. तो जब भी आप जैसे you go to a bookshop, get both of them, study the first chapter, एक दो पेज पढ़ लो, जो लैंग्वेज आपको सूट करेगा, the language that suits you, just take that book only. तो एक चैप्टर पहले पढ़ लेना, then only go for that book. Once you're done with all this, NCERT and a standard book, this is NCERT covering your basics, and this is a standard book covering your advanced concepts as well. But even after studying all this, it's not necessary that you will be able to solve all the questions. इसके बाद भी, for that purpose, you have to understand कि आपको बहुत ज़्यादा करंट कवर करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में. Current has to be covered. So take any of the monthly magazines. जो भी monthly magazine market में है, take them. Any monthly magazine. Don't go for a yearly magazine. आपका देखा होगा आपने, जैसे 365 करके एक yearly magazine आता है. Don't go for a yearly magazine. 365 has entirely failed in the attempt of 2023. So don't go for a yearly magazine. Go for a monthly magazine. Or monthly magazine, you already know economics का we have a portion of economics. Cover the topic which is related to the class. If you are studying development, there might be a news regarding development. So cover that developmental aspect from that monthly magazine. We'll be touching a lot of stuff in the advanced classes also. Because the foundation batch hai, I'll be touching the peripheral topics, economics ki major. But advanced level mein you have to be very well aware कि आंसर राइटिंग कैसे होता है, PYQs में क्या क्या थीम्स आए हैं, तो कहाँ से क्वेश्चन इज अ प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर द अटेम्प्ट ऑफ 2024. सो वो होगा एडवांस लेवल पर. बट फॉर दिस क्लास आई एम टेलिंग यू, गो फॉर मंथली मैगजीन्स ओनली फॉर द टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू द क्लास. ठीक है, डोंट गो एंड स्टडी एवरीथिंग, बिकॉज आपको जब फाउंडेशन पूरा कवर हो जाएगा, देन ओनली यू विल वैल्यू करंट अफेयर्स, देन ओनली यू विल वैल्यू योर न्यूज़पेपर्स. अभी शायद आपको न्यूज़पेपर भी पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा होगा ऑफ इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, बिकॉज मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर अभी पेंडिंग है, फाइनेंशियल सेक्टर इज पेंडिंग, योर एक्सटर्नल सेक्टर इज पेंडिंग, सो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. वंस दोज चैप्टर्स आर डन, यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड मंथली मैगजीन्स एज वेल एज योर न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर के बारे में तो यू ऑलरेडी वुड नो. ये तो हो गया व्हाट यू हैव टू डन ऑन अ डेली बेसिस. बट देयर इज वन थिंग दैट यू हैव टू डू वंस अ ईयर. ये तो डेली बेसिस पे करना है आपको. But there is one thing that you have to do once a year, that is cover the budget economics survey. The budget economics survey. So 2023 का budget economics survey, I will be touching a lot of portions of that. But अगले साल जो आएगा, that has to be done by you itself. तो budget economics survey का don't go for highlights, क्योंकि आपको पता चला होगा कि इकोनॉमिक सर्वे के कुछ मेजर हाईलाइट्स आ जाते हैं. There's just a page of 8 or 9 pages, तो वो हाईलाइट कवर हो जाता है. But it is very important for you, once you're done with all the concepts of economics, once you're done with all the books, all the standard books and the monthly magazines, you have to study economic survey by your own eyes. पूरा economic survey. ठीक है? And I'm telling you, कोई किताब, कोई NCERT, कोई टीचर आपको उतना नहीं सिखाएगा जितना आप economic survey के एक चैप्टर से सीखोगे. So you have to study it with your own eyes. खुद से एक चैप्टर पढ़ना है. समरी बनाने की जरूरत नहीं. डोंट मेक समरीज ऑफ दैट. समरीज आर ऑलरेडी गिवन बाय इंस्टीट्यूट्स. टेक अ सिंपल समरी, यू विल वैल्यू दैट समरी वंस यू हैव स्टडीड द इकोनॉमिक सर्वे बाय योर ओन आइज. ठीक है, तो अगले साल जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा, एक चैप्टर उठा. अब तो एक ही वॉल्यूम आता है ना, अभी तो ज्यादा, यू डोंट हैव अ ह्यूमंगस डॉक्यूमेंट नाउ, यू जस्ट हैव चैप्टर वाइज डॉक्यूमेंट. सो indiabudget.gov.in पे जाइए. सो यू हैव चैप्टर वाइज इकोनॉमिक सर्वे. वहाँ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 उठाकर जस्ट गो थ्रू इट. यू सी आपको कितना नई नॉलेज मिलेगी अबाउट इकोनॉमिक्स, बियॉन्ड व्हाट द बुक्स हैव टोल्ड यू, बियॉन्ड व्हाट द टीचर सजेस्ट. ठीक है, इकोनॉमिक्स सर्वे इज द प्राइम मटेरियल ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, वो आपको बनाएगा मेंस लेवल का, मेंस रेडी बनाएगा आपको इकोनॉमिक्स सर्वे. ठीक है, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टडी इट एवरी चैप्टर, डोंट स्टडी द हाईलाइट्स. ऐसा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू स्टडी द हाईलाइट्स, यू हैव अ पोइम फॉर एग्जाम्पल, किसी बहुत अच्छे ऑथर पोइट ने कोई पोइम लिखा है. उस पोइम, आप वो पोइम नहीं पढ़ रहे, आप उसकी तशरीह, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो.
When you're studying the explanation, you might be able to get the data, but you will not value the poem. To value the poem, you study the poem with your own eyes. ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे इज जस्ट लाइक अ पोएम टू यू. तो जो वो वैल्यू नहीं करोगे आप जब तक आप उसको खुद नहीं पढ़ोगे. ठीक है, तो वो देख लेना. ये हो गया थोड़ा आपका जितना भी जरूरत है. स्टिल आफ्टर डूइंग ऑल दिस, I told you yesterday only what is the trend of economic questions. You have around 15-16 questions every year coming in the prelims examination. After doing all this work, you will still not be able to solve 3 to 4 questions in economics. वो नहीं कर पाएंगे. That would not be covered in the NCERT, would not be covered in the standard books, would not be covered by any teacher, would not be covered even by economic survey, even by monthly magazines. So 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर साल. सो उसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत खराब है. लाइक वो सब टॉपिक्स पढ़ने के लिए यू हैव टू स्टडी अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड यू नेवर नो कि उसमें से कोई क्वेश्चन आए भी ना. ठीक है, सो इफ देयर आर 3-4 क्वेश्चंस एवरी ईयर दैट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, इट्स फाइन. यू डोंट हैव टू डू 100 आउट ऑफ 100. आपको 100 में से 85-88 अटेम्प्ट करने हैं. उसमें से इकोनॉमिक्स के 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट रहते हैं. दे आर समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जो कोई मटीरियल कवर नहीं करता है. Like there was this question that came this year only. It was a question on beta. So it's a topic that is covered in financial sector. तो financial sector की आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, beta was never mentioned. It was not mentioned in the monthly magazines. It was not mentioned in any of the books. It was not mentioned in the NCERTs. Not mentioned in the Tamil Nadu books. कहीं पर mention नहीं था. Not mentioned in the economic survey. So nobody knows. Nobody knew at that time what beta is. उसके बाद से पीपल स्टार्टेड एक्सपैंडिंग देयर नॉलेज. तो कुछ क्वेश्चंस हर साल ऐसे आएंगे जो आप नहीं कर पाओगे. इट्स फाइन. अगर 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के डिफिकल्ट आ रहे हैं, जस्ट डोंट स्टडी एन एंटायर बुक टू डू दैट क्वेश्चन. आपको स्मार्टली चलना है. जिसमें ज्यादा रिटर्न्स की गारंटी है उधर इन्वेस्ट करना है. डोंट इन्वेस्ट योर टाइम इन समथिंग दैट वुड नॉट गिव यू मच रिटर्न. ठीक है, ये हो गया बेसिक्स व्हाट यू नीड टू डू फॉर दिस कंपोनेंट. विल स्टडी नाउ. सी, 2 क्लास मैंने बराबर 5 घंटे दिया आपको to start the process of economics. Ashwini, you can go for any of the magazines. All of the magazines cover the same thing. So don't worry about which magazine you're studying. Just take one of them and study. Don't go for micro part. You should primarily go for the macro part. Enrol, there are some economies, primarily in the Scandinavian countries, that consider mining to be in the secondary sector. But we have seen that the mining process involves exploitation of the natural resources directly. So that is part of the, the primary sector. It's mentioned in Ramesh Singh. आपका अगर book है उस पर आपको मिल जाएगा. चलिए. Now see, मैंने बराबर 5-6 घंटे दिया आपको जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स वगैरह क्या है, बेसिक सिस्टम्स क्या है, फेमिलियरिटी बढ़े आपकी. पर अब से आई एम गोइंग टू स्पीड अप नाउ. ठीक है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम. वी कैन नॉट गो फॉर 2-3 मंथ्स जस्ट टू स्टडी इकोनॉमिक्स. तो मैं स्पीड अप करूंगा. और जब भी आपको लगेगा दैट मैं तेज जा रहा हूँ, जस्ट स्लो मी डाउन. ठीक है, यू कैन स्लो मी डाउन और कीप ऑन राइटिंग विद मी. जहां पर मुझे डिक्टेशन कराना है, I'll stop you, I'll dictate. बाकी आप साथ साथ लिखिए. ठीक है, यू ऑल्सो गेट समरी आफ्टर क्लास. वो समरी शीट्स मिलते हैं आपको, तो वो आपका अगर कुछ छूट जाता है वहां से भी कवर होगा. तो नाउ हम थोड़ा पेसअप करेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. बहुत बेसिक लेवल पे जाऊंगा मैं. तो अवर टुडेज टॉपिक वुड बी, इट इज पार्ट ऑफ द चैप्टर वी स्टार्टेड यस्टरडे ओनली, ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट. Growth and its measurement. Growth and its measurement. Now see, this topic is important for your geography optional. जिनका भी है उसमें you have a topic of development, economic development. Economic development, you cannot understand development until you have understood the concept of growth. ये दोनों साथ साथ आते हैं. सो पहले ग्रोथ को टैकल करेंगे. विल कवर ऑल द डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ, देन ओनली विल शिफ्ट टू डेवलपमेंटल पार्ट, जो आपको हेल्प करेगा अपने ऑप्शनल में. नाउ व्हाट इज ग्रोथ? सबसे पहले आई ऑलरेडी टोल्ड यू
Growth is one of the central problems. It is the sixth central problem. Yesterday only we covered the six central problems. Number one, what to produce, problem of allocation of resources. Number two, how to produce, problem of choice of technique. For whom to produce, problem of distribution, problem of economic efficiency, problem of full employment, and problem of growth. It is one of the major central problems. Now, एक चीज तो पता है, it is an important concept. It is an important concept. It is an important problem that you have to develop an answer to. If the answer is given by market, it becomes a market economy. If the answer is given by the state, it becomes a state economy, socialist economy. ये कल हमने कवर कर लिया. Now, what is growth? I have yet not defined growth. अभी तक growth define नहीं किया. I just gave you an example. Growth meaning, increasing your income. That is growth. But pure economic definition क्या है growth? We in economics say growth is, write down, economic growth is increase in economic goods and services. Increase in economic goods and services. Increase in economic goods and services. Economic goods and services. For example, I told you growth is an increase in economic goods and services. Pay attention. This is India. India is earning an income in 1 year is earning an income of 100 crores. So this income that India has earned was in 2023. Next year in 2024, India earned an income of 110 crores. So we have seen there is a growth of 10%. That is growth. Or the concept is ये income तो निकाला आपने, you compared the income of 2 years and you got a measurement of growth. ऐसी से ऐसी growth मिलता है. But my question is, where did you get this 100 crore from? You got this 100 crore from when you produced goods and services. I already told you in the first class, production is income. You produce, you get more income. जितना मैं क्लासेस दूंगा उतना पैसे कमाऊंगा. जितना इंडिया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा उतना वो इनकम कमाएगा. तो ये जो इनकम आपने कंपेयर किया, द इनकम दैट यू कंपेयर्ड फॉर 2 consecutive years, you got this income by production of goods and services. But which goods and services? There are different types of goods and services. I told you you have to produce economic goods and services. What is economic goods and services? These are those goods and services that are produced out of an economic motive. Produced out of an economic motive. लिख रहे हैं आप? Produced out of an economic motive. जिसके पीछे एक economic motive. What is an economic motive? Economic motive simply means profit motive. Profit motive. Profit motive. Is there a good or a service in the economy that is produced every year but it has no economic motive? कोई है ऐसा सर्विस या कोई गुड जो प्रोड्यूस हो रहा है, हर साल प्रोड्यूस हो रहा है, बट इट हैज नो इकोनॉमिक मोटिव? थिंक अबाउट राइट नाउ, राइट, टॉक अबाउट इट राइट नाउ. गुड्स बीइंग प्रोड्यूस विदाउट एन इकोनॉमिक मोटिव. फॉर एग्जाम्पल, आप यहां ओल्ड राजेंद्र नगर आए, कहां से आए? सड़क से चल रहा है ना, यू वॉकिंग ऑन द रोड. हु बिल्ड दैट रोड? द गवर्नमेंट. Have they taken any money from you? Are they earning any profit from that particular commodity? No, they're not. Road is a public good. Road क्या है? It is a public good. Public good has no economic motive. Public good has no economic motive. Yeah. See, that is debatable. Why? Because if it's done by our, let's suppose our mother, then it has no economic motive. But if the same work is being done by some maid, then it has an economic motive. So it depends on who is producing. But whoever is producing a road, you know that we don't demand money from the public just to walk on it. तो ये गुड ही पब्लिक गुड है, इसका कोई इकोनॉमिक मोटिव नहीं है. जो आप बता रहे हैं उसका मतलब हो गया वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है. अगर हमारी मां प्रोड्यूस कर रही है तो इकोनॉमिक मोटिव नहीं है, लेकिन अगर वही सर्विस मेड दे रही है तो उसका इकोनॉमिक मोटिव है. तो इट्स डिबेटेबल. ठीक है ना. लेकिन यहां पर आई टोल्ड यू
public good is the good which has no economic motive, like road. There's another service that government provides you every year without charging money. For example, government provides you defense from Pakistan and China. Provide करिए आपको, आप safe हो दिल्ली में, and we know that this is a time where according to Noam Chomsky, is leading scholar of the world right now, he says, it's not me quoting it, he says in his book, Who Controls the World, उनकी एक book आती है नोम चॉम्स्की की, you should go for it. उन्होंने अपने पहले चैप्टर में लिखा है, there are two existential threats to humanity. First is climate change. It is an existential threat to human species. And the second is nuclear war. And nuclear war के बहुत important spark points है पूरी दुनिया में. We have a nuclear war, right? Just last week, there was a member of the IDF, Israeli Defense Forces, जिसने categorically, publicly interview में कहा, we might see a use of nuclear weapon in Gaza. उसने सीधे बोला है, that might kill around 2 million people in Gaza. तो स्पार्क पॉइंट इजराइल बन सकता है, फलस्तीन बन सकता है, स्पार्क पॉइंट आपका रशिया, यूक्रेन, क्राइमिया बन सकता है, सीरिया बन सकता है, and another, there was a study done in Harvard that what would be the impact of a nuclear war between India and Pakistan. Only mad people can think about a nuclear war in the current times. You would not only kill the people of India and Pakistan, you would kill at least 4 billion people in the world. It's not the explosion of a nuclear war that would be more detrimental. It is the after effects, जो रेडिएशन डोजेस फैलेंगे, जो कैंसर होगा लोगों को, और जो न्यूक्लियर विंटर आएगा उसके बाद, बिकॉज मशरूम क्लाउड बाहर आता है, इट ब्लॉक्स द सनराइज, एग्रीकल्चरल आउटपुट पूरा कोलैप्स हो जाएगा और टेम्परेचर कम हो जाएगा दुनिया का. इट वुड ब्रिंग द कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के कोलैप्स से 4 billion people would die of hunger if India and Pakistan used all their nuclear weapons on each other only. This was a study done in a university in US. तो इस वक्त आपको इस न्यूक्लियर होलोकॉस्ट से कौन बचा रहा है? इंडियन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू यू इन दिल्ली, बिकॉज हमें पता है इफ यू हैव एन एनिमी स्टेट, उन्होंने आपकी मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज पे टारगेट बना के रखा होता है. जैसे हमने भी टारगेट रखा है इस्लामाबाद पे, कराची पर, उनने भी टारगेट रखा होगा दिल्ली पर, मुंबई पर, कोलकाता पर टारगेट बना के रखा होता है, जो सेंसिटिव लोकेशन है आपकी. आप पावर हब, पावर सेंटर आपकी कंट्री का जहां पर भी है, आप उसको खत्म करो, कंट्री दरहम बरहम हो जाएगी. इसीलिए इंडिया को ये डिफेंस प्रोवाइड, इंडिया हमें डिफेंस प्रोवाइड कर रही है. एंड गवर्नमेंट डज नॉट आस्क कि आपने टैक्स भरा, इनकम टैक्स, इफ यू हैव पेड द इनकम टैक्स आई विल गिव यू डिफेंस सर्विसेज, इफ यू हैव नॉट पेड द इनकम टैक्स आई विल नॉट गिव यू डिफेंस सर्विसेज. ऐसा नहीं होता है. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स यू डिफेंस सर्विसेज विदाउट एन इकोनॉमिक मोटिव. They don't want to earn something out of it. That is an example of public good without an economic motive. It is non-rival, non-excludable. You cannot exclude anyone. I cannot exclude Cross from providing, government does not exclude Cross from providing him defense. ठीक है, वो non-excludable commodity होती है, आपको सबको देना पड़ेगा. ठीक है, but there is a commodity like जो मैं आपको दे रहा हूं, it is being produced out of an economic motive. इसके पीछे एक profit motive है. ये excludable है. हम उसी को पढ़ाएंगे जिसने फी भरा है, जिसने नहीं भरा उसको नहीं पढ़ाएंगे, उसको एक्सक्लूड कर दिया हमने. तो गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ एन इकोनॉमिक मोटिव आर एक्सक्लूडेबल. यू कैन एक्सक्लूड सम पीपल फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ दैट गुड. आप पिज्जा डोमिनोज की दुकान पे गए, यू आस्क्ड फॉर अ पिज्जा, दैट पर्टिकुलर पिज्जा इज बीइंग सोल्ड टू यू आउट ऑफ एन इकोनॉमिक मोटिव, एंड पिज्जा डोमिनोज कैन एक्सक्लूड एनीबडी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ दैट पिज्जा. इफ यू डोंट पे आउट, दे विल नॉट सेल यू द पिज्जा. तो दैट इज एक्सक्लूडेबल कमोडिटी, जिसको बेचने वाला किसी को भी एक्सक्लूड कर सकता है. तो दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज. दीज आर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ एन इकोनॉमिक मोटिव. नाउ सी, नाउ द क्वेश्चन इज, वी अंडरस्टूड व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. It simply is increase in the production of economic goods and services. बस यही आपने जो मैंने अभी बताया आपको. So a country like India, if you are producing economic goods and services, from now on, whenever I say goods and services, you have to understand I'm talking about economic goods and services produced out of an economic motive. Now, whatever goods and services are being produced in India, if I increase the production, that will give me growth. I have to increase my production, that will give me growth. Now the question is, how do you measure the production of goods and services in India?
आप उसको मेजर कैसे करोगे? इन एब्सोल्यूट टर्म्स हाउ डू यू मेजर इट? हम ऐसा कर सकते हैं, इफ आई प्रोड्यूस्ड 100 यूनिट्स लास्ट ईयर and I am producing 110 units this year, I have seen an increase of 10%. That will give me growth. So growth is a relatable concept. आप दो periods को लो and you compare the two periods, you'll get the growth. Problem is not the calculation of growth. Problem is the calculation of these units production. कि production कितना किया आपने, वो है असल प्रॉब्लम. ग्रोथ निकालना मेजर प्रॉब्लम नहीं. आप लास्ट ईयर का प्रोडक्शन लो, इस साल का प्रोडक्शन लो, कंपेयर करो, you'll get growth. पर सवाल है लास्ट ईयर का प्रोडक्शन और इस साल का प्रोडक्शन निकाले कैसे? एंड दिस वाज अ डिबेटेबल कॉन्सेप्ट फॉर decades together. People did not know how to measure this production in a country. For the first time it was done by Simon Kuznets. Simon Kuznets. आप लिखेंगे एक लाइन, राइट डाउन. The measuring process of growth has been a major riddle for experts. A major riddle for experts. Yash, I'll not be able to repeat much. अभी हमने शुरू ही किया. We're just talking about growth. Okay. Has been a major riddle for experts. However, the idea of GDP put forth by Simon Kuznets in 1934 tried to calculate a country's value of production. A country's value of production. Value of production. Does anyone in the class have a confusion on how production is in reality your income? इस पर कोई confusion है आपको? Production आपका income कैसे है? See, for example, ध्यान लगाइए, मैंने 1 घंटे का क्लास दिया, 1 hour क्लास. आई वांट टू फिगर आउट कि मेरा इनकम कितना है, हाउ मच इज माय इनकम. निकिता, इट इज साइमन कुजनेट्स. So I produced a 1 hour of class. ये मेरा प्रोडक्शन है. Now you're asking me, sir, आपका इनकम कितना है? So I'll tell you, I produced 1 hour of class, और ये 1 hour class का I charge 10,000 rupees. So the value of my production is how much? 10,000. समझ गए आप? This is the value of my production. So can I say, whatever is the value of my production, this 10,000 rupees, this is the money that actually I am earning. ये मैं कह सकता हूं, जो वैल्यू मेरी प्रोडक्शन का है वही पैसा मैं कमा रहा हूं. तो I produced 1 hour of class, that's my production. The value of that production is 10,000, और यही 10,000 रुपए Edukemy मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है. That becomes my income. So in reality, Simon Kuznets, when he gave the idea of GDP to calculate the value of production, in reality he was trying to calculate a nation's income. कह सकता हूं मैं, ये कंट्री का इनकम निकालना चाह रहा था. So whenever in India we have to calculate the value of all economic goods and services, इसका वैल्यू कितना है? In reality what we are trying to calculate is national income. That is your chapter in NCERT, national income accounting. National income कैसे निकालना है? National income निकलता है प्रोडक्शन से. आप प्रोडक्शन निकालो, national income निकलेगा. So this is the concept of Simon Kuznets. He gave it for the first time. Now let's understand the concept of GDP. Number one, we have GDP, gross domestic product. जल्दी जल्दी करेंगे इसको, because you'll not find any question from this. आज GDP से क्वेश्चन आना बंद हो गया है. So we'll understand GDP क्या है basically.
एक जीडीपी आपको, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड जीडीपी। जीडीपी समझ आ गया, यू विल इजीली अंडरस्टैंड एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी और पीसीआई, सब वो कुछ इसी से निकलता है। सो आई विल गिव मोर टाइम टू जीडीपी। वंस जीडीपी इज डन, एवरी अदर इंडेक्स इज डन। नाउ इट इज समथिंग वी कॉल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज बताओ, why this product word is used here? Because what do we want to calculate? Production. But production के units नहीं. We don't want to calculate the units of production. We want to calculate the value of production. Because when we calculate the value of production, we get national income. So first of all, write down the definition of GDP, जिसको मैं फिर बाद में interpret करूंगा. It is the money value of all final goods and services. GDP. It is the money value of all final goods and services produced in a financial year in the domestic territory, by the normal residents. Money value of all final goods and services produced in a financial year in the domestic territory by the normal residents. Listen to me, you go to a book, you'll find different definitions of GDP. एक डेफिनेशन एनसीईआरटी देगा, एक डेफिनेशन नितिन सिंघानिया देगा। अगर आप कॉलेज लेवल की किताबें देखेंगे, वहां पर अलग, यूनिवर्सिटी लेवल की किताबें, वहां पर you'll have a separate definition. Close your eyes and follow the definition that I am giving you. ठीक है, I've studied them all. मैं आपको वही डेफिनेशन दे रहा हूं जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बाकी डोंट गेट कंफ्यूज कि उसमें ये लिखा है, उसमें सिटीजन लिखा है, उसमें रेजिडेंट क्या लिखा है। डोंट वरी अबाउट दैट। जो मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट क्लोज योर आइज एंड फॉलो इट। नाउ सी, money value of all final goods and services produced in the domestic territory by the normal residents, the concept of GDP. अभी मैं ग्रॉस वगैरह पे नहीं आया, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए what is the meaning of this definition? These are the keywords. एक एक करके I'll give you explanation of these keywords. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसी कीवर्ड से निकल जाएंगे आपके। सबसे पहले मनी वैल्यू। Some books write monetary value, one and the same thing. So GDP is, whenever you get GDP, you don't get GDP, the production of India, the gross domestic production of India is 50,000 tons of cement. You don't get that. What you get is money value. आपने जो प्रोड्यूस किया उसका मनी वैल्यू कितना है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इन वन ईयर प्रोड्यूस्ड 100 tons of cement. 100 tons of cement. Whenever we calculate GDP, we don't take this tons of cement. No, we multiply it with the price. क्या है? Tons of cements का price क्या है? Finally, you get the money value of these tons of cements. आपको money value चाहिए. You don't need a unit. So what is money value? It simply means whatever units of goods and services are being produced multiplied by its price. वो देता है आपको मनी वैल्यू। तो हाउ मेनी क्लासेस? 50 क्लासेस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, दैट गिव्स मी मनी वैल्यू। हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ रोड्स, हाउ मच सीमेंट, हाउ मच कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हाउ मच योर ब्रिक्स, हाउ मच ऑफ योर बुक्स एंड पेंसिल्स एंड एवरीथिंग। तो आप यूनिट्स लो, मल्टीप्लाई प्राइस करो, आपको मिलेगा मनी वैल्यू। नाउ पे अटेंशन, व्हेनेवर इंडिया में we have a unit of production and we want to multiply it by price, what is the unit of price in India? It is rupees. तो जो भी हमें मनी वैल्यू निकलेगा, that has to come in rupees. एग्रीकल्चर में कितने रुपीज का प्रोडक्शन हुआ, इंडस्ट्रीज में कितने रुपीज का प्रोडक्शन हुआ, एंड हाउ मच इज द रुपी प्रोडक्शन इन सर्विस सेक्टर। तो रुपीज में निकालना है। व्हाई? बिकॉज रुपी इज द कॉमन measuring rod. We will not go and see we produced 50,000 hours of classes in service sector, and we produced 50,000 tons of cement in industries, and we produced 50 quintals of rice in agriculture. ऐसे नहीं निकलते. We need a common measuring rod.
रुपीज में. सो एग्रीकल्चर में रुपीज में, यहां भी रुपीज में, वहां भी रुपीज में. यू गेट अ कॉमन मेजरिंग रॉड, सबको ऐड करो, यू गेट इंडिया जीडीपी. तो ये हो गया मनी वैल्यू इन रुपीज. रुपीज में चाहिए आपको. चलिए आगे, समझ आ रहा है आपको? कॉमन मेजरिंग रॉड. मेजरिंग रॉड, मेजरिंग रॉड का मतलब यू नीड अ कॉमन स्टैंडर्ड. ठीक है. सेकंड, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. टेल मी what kind of goods and services? Are they economic goods and services or public goods? They are economic goods and services because growth तो economic से ही मिलता है, वो मैंने पहले ही बताया. Now final goods and services, pay attention. This is, I'll give you an example. Final goods and services समझा रहा हूं मैं. I'll give an example. I have to calculate इंडिया में प्रोडक्शन कितना हो रहा है. Let's assume for the sake of argument there are only 2 companies in India. तो 2 companies. एक का नाम है ब्रिजस्टोन. Another one is, let's suppose, Mahindra. These are the only 2 companies in India, Bridgestone and Mahindra. Bridgestone क्या बनाती है? Tires. So they produce the tires. Let's suppose the value of the tire is 50,000. तो उन्होंने जो 4 टायर प्रोड्यूस किए एक साल में, that is 50,000. And then Mahindra creates a car named Scorpio. Let's suppose Scorpio बनाया उन्होंने. And they purchased these tires from Bridgestone and they included these tires in their car. And the value of the car is 10,50,000 rupees. 10,50,000 rupees. So I now have to calculate the total value of production in India. So I first see how many companies do we have. We only have 2 companies in India. So what is the value of the first company? The value of the first company is 50,000. What is the value of the second company? The value of the second company is 10,50,000. The total production is 11 lakh rupees. That becomes my GDP. आपको लग रहा है करेक्ट कैलकुलेशन की मैंने? Are you finding any discrepancy in whatever I've done on the board? कुछ गलत लग रहा है आपको? क्या गलत लग रहा है? डबल कैलकुलेशन हो गया है ना? So this 50,000 that I've added here in the Bridgestone are again being added here in when I was calculating the value of the Scorpio car. So economists suggest to avoid this double calculation, we would not calculate intermediate goods. Intermediate good क्या होता है? These are goods that are again used in another commodity. What we will take only is a final good. We'll only take final good because intermediate good ka value is already added in the final good. That is what I have written here. We'll only take the money value of all final goods and services. What is final goods and services? That are produced for final consumption. Produced for final consumption. Produced for final consumption. Devarga, if the tire company is producing a commodity which is meant for final consumption, then their income would be part of GDP. If they are producing the commodities that are intermediate commodities, then their income would not be part of GDP. समझ आ रहा आपको? इंटरमीडिएट गुड्स को हमें इस्तेमाल नहीं करना. इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? जो फर्दर इस्तेमाल होगा इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी. So we'll only take the final commodity. उसमें सारे intermediate goods added होते हैं. So now we have to only take the final commodity which is meant for final consumption. Now tell me, I'll give you one example. Tea leaves. Is it a final good or an intermediate good? Now see. If I use these tea leaves, I as an individual, मैं दुकान पे गया, I purchased these tea leaves, और घर पे directly I made a tea and consumed it. तो मैंने चाय लेकर I directly consumed it. Tell me, have I produced another commodity from tea leaves and then sold that commodity to the customer? नहीं. I just took the tea leaves and consumed it by the making process of tea. तो यहां पर आई एम यूजिंग द टी लीव्स फॉर फाइनल कंजम्पशन.
that means it becomes a final good because you directly consumed it. But if the same tea leaves are purchased by a hotel wala and then he makes a chai and then he sells that chai, अब यहां पर this chai becomes the final good and tea leaves क्या बन गए? Intermediate. So what the example suggests is, it is not in the nature of the good whether the good is final or intermediate. It is in the economic use of it. आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हो? Fine, write down this slide. It is not in the nature of the good. It is not in the nature of the good whether the good is final or intermediate. Whether the good is final or intermediate, it is in the economic use of it. It is in the economic use of it. Economic use of it. Clear hai? Is it clear, guys? Okay. Now let's come back. Money value of all final goods and services, itna samajh aa gaya. Third keyword is in a financial year. Money value of all final goods and services that are produced in a financial year. Now see, we have two concepts. We have a calendar year. Calendar year shuru hota hai 1st January to 31st December. You know? That is a calendar year. But calendar year ke against we have a financial that starts on 1st April to 31st March. हम financial year कहते हैं. In economics we use financial year for multitude of reasons. Because agriculture में पहले production होता था, जो भी crops आते थे उनका add करने के लिए फिर हमने financial year का शुरुआत किया. तो primarily 1st April से हमारा साल नया साल शुरू होता है economics में, finances में. Now from this 1st April to 31st March, whatever is being produced in this one year, that is the GDP of that year. तो हमारा जो 1st April है, let's suppose this is the 1st April of 2023. April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February and March of 2020. अब इसमें 2 साल का involvement है. That is why we write it like this, financial year 2023-24. इसको मैं ऐसे दिखाते हैं. So whenever you see this 23-24, इसका मतलब it's talking about a financial year. If you only see 2023, that means it's talking about a calendar year. If you see 23-24, it means financial year. Sometimes you see like this, FY24. क्या लिखते हैं? FY24. FY24 का मतलब हो गया 23-24. ठीक है? FY25, it means 24-25. इतना क्लियर हो बेसिक से. Now इस फाइनेंशियल ईयर से हमें we can solve a very important concept. Now see, what am I telling you right now? So this is India. Money value of all final goods and services which are being produced in India in a financial year. In a financial year. Suppose this financial year is 2022-23 is the. You want to calculate the GDP of 22-23. इस एक साल का GDP निकालना. GDP एक ही साल का होता है. Now when you calculate the GDP of 22-23, you have to take the goods and services produced in 22-23. बस. Now tell me, if this is the idea of a financial year, suppose आप करोल बाग में गए होंगे उस वाले साइड से where we have sale of cars, गाड़ियां वाड़ियां बेचते हैं. So for example, I want to purchase a car and I don't have much money. मुझे 50-60 लाख तो नहीं है. मैं 10-15 लाख की गाड़ी खरीदना चाहता हूँ और purchase a car of around 10-15 lakhs. Let's suppose I want to purchase a Scorpio. Scorpio खरीदना है. अब नई गाड़ी के लिए पैसे नहीं है. So what I do is I go to this car वाला. I ask him कि कितने में Scorpio दे रहे हैं आप. So he tells me Scorpio भैया अभी 8 लाख की है. तो second question is कौन सा मॉडल है?
right? We asked कौन सा model है, so he tells me the model is 2018, 18 का model है. मैंने कहा ठीक है. मैंने I checked the condition, I found that car is in a good condition. I gave the 8 lakh rupees and took the car. The car owner has earned 8 lakh rupees. Is it his income? Income है ना उसका, income है उसका 8 लाख रुपए. Is this 8 lakh rupees part of national income? Is it part of GDP? Why not? Yeah? Very good. Why? Because this car was already produced in which year? 2018. So when we were calculating 2018's GDP, we had already added that Scorpio in 2018. Now what am I doing is, I am reselling the same car again and again. So whatever we resell is not being produced in that year. तो स्कॉर्पियो जो 2023 में मैंने खरीदी, that was not produced in 2023. It was produced in 2018. It was the GDP of 2018. It cannot be the GDP again in this year. You only produce a commodity once. So you only have to take commodities that are produced in this financial year. वही आपका GDP है. You ignore all the second-hand market. Second-hand sale of goods and services are not taken into consideration in GDP. वो लिया ही नहीं जाता उसमें. GDP only takes into consideration the production in this financial year. It does not take the production of previous years into consideration. जो previous year की production है वो previous year का GDP है. इस साल की production बतानी है आपको. That is why we ignore all second-hand transactions in GDP. समझ आ रहा आपको? Right on this point. GDP ignores all transactions in which goods change hands. In which goods change hands. That is where there is just the transfer of ownership. Where there is just the transfer of ownership. Transfer of ownership. Next. तो कहां पहुंचे हम? Money value of all final goods and services produced in a financial year. What is the next keyword? Domestic territory. Domestic territory. Now this is India. Now what am I telling you now is that the production, that is GDP, will only take that production into consideration which is being produced inside this domestic territory. इसके बाहर अगर कोई production है, that is not our GDP. GDP is only that production जो हमारी domestic territory में. So the question might be, sir, domestic territory में क्या आता है? Domestic territory में काफी सारी चीजें आती है. सबसे पहले we have this boundary of India. We call it political frontiers. Political frontiers. So whatever is inside the political frontiers is India's domestic territory. The domestic territory includes, number one, political frontier. Political frontiers. तो इंडिया का पूरा मैप निकालिए. तो whatever are the political frontiers, उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रही है, that is part of India's GDP, national income का हिस्सा है. Not only political frontiers, we also have the territorial waters. ये जो पानी है, up to 12 nautical miles. So these territorial waters is India's domestic territory. Territorial waters up to 12 nautical miles. Up to 12 nautical miles. 12 nautical miles.
that is also India's domestic territory. You go to Delhi में जब आप जाएंगे वहाँ पर you also see a lot of foreign embassies, है ना. तो in Delhi we have a lot of foreign embassies. यहाँ पर जर्मनी, पाकिस्तान, चाइना, etc., सूडान, उड़ान, सब की आपकी embassies. Are these embassies inside the domestic territory of India? है ना, political frontier के अंदर ही है ना, so they are inside the political frontiers. But these embassies, these areas are not India's domestic territory. These are the territories of the foreign countries. So if we have an embassy of Pakistan, that portion of land is not India's domestic territory, that is the domestic territory of Pakistan. But in Pakistan, inside the political frontiers of Pakistan, we would also have Indian embassy, right? So that Indian embassy is the domestic territory of India. समझ रहे आप? That portion is India's domestic territory. So it will include Indian embassy, military establishments, etc. Indian embassies, military establishments located abroad. Located abroad. Located abroad. Now see. One more point. See, number 4, domestic territory में और क्या आता है? This is the political frontiers. We have an airline known as Air India. No? Who owns this Air India? Tata. Owner कौन है इसका? Tata. Who operates it? Tata. Owned and operated by whom? So we have a company, Air India, that is owned and operated by Tata. And what is a Tata? Tata is an Indian resident company. इंडिया की क्या है? रेजिडेंट कंपनी. इंडिया में कंपनी है, रेजिडेंट कंपनी हो गया जो इंडिया में ऑपरेटेड है, इंडिया में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर. सो वी हैव अ कंपनी बाय द नेम ऑफ एयर इंडिया. दिस एयर इंडिया इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ resident of India, resident of country. I'm not talking, mind you, I'm not talking about citizen of India. I'm talking about a resident of India. A resident हो गया जो इंडिया में रहता है. That is a resident. Can be a citizen, can be a foreigner. पर रेजिडेंट होना जरूरी है. रेजिडेंट का अलग क्राइटेरिया होता है. नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? जो 1 साल, कम से कम 1 साल रहता है कंट्री के अंदर, एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री. ये मैं अभी बताऊंगा आपको. फिलहाल वी हैव एयर इंडिया. इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया. So that means it is an Indian resident company. We'll come to that. Deepti, please be patient. Everything will be covered in the class itself. Just be patient and listen to what I'm saying. सब कुछ cover हो जाएगा. Now see. Now Air India is a company owned and operated by a resident of India. Now this Air India has a flight. It takes a flight from UK to Japan. Takes a flight from UK to Japan. Let's assume for the sake of argument. एक flight ली Air India ने UK से Japan. Would this Air India earn some money there? है ना? Are they producing something? What are they producing? But they are producing a service outside India's domestic territory. है कि नहीं? But would that value of that service, उसका जितना भी value है, is it part of India's domestic territory? Yes, it is. Halanki, the thing is happening outside India, but it is still India's GDP. Why? Because whatever the company has done, that company itself is operated by a resident of India. तो GDP में it's not necessarily कि आपको इधर ही करना है, but operation और ownership इंडिया में ही होनी चाहिए.
तब फिर आप कहीं भी करो वो डोमेस्टिक टेरिटरी बन जाएगी। समझ रहे हैं आप? राइट डाउन दिस पॉइंट। शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, ships, aircraft owned and operated by the residents, owned and operated by the residents, is also part of India's domestic territory. Now see, तो डोमेस्टिक टेरिटरी भी हो गया आपका। फाइनली व्हाट डू वी हैव? नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट की दो कंडीशंस है। You have to be in India at least 1 year, एक साल तक live in India for at least 1 year. You have to reside in India for at least 1 year. And your economic interest should lie in India. Economic interest lie in India. इंडिया में आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड लाई इन इंडिया। इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिंपली कुड मीन आपका पैसा कहां ले जाना चाहते हो आप। सो इफ योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज इन इंडिया एंड यू हैव स्पेंट मोर देन 1 year in India, you are a normal resident of India. Normal resident है। Now tell me, does it talk about citizenship? You should have an Indian citizenship? No. So in GDP, there is no concept of Indian citizenship. There is concept of normal residents. So normal resident can be a citizen, can be an alien. ये citizen भी हो सकता है, ये alien भी हो सकता है। So for example, if we have foreign company that ordinarily resides in India for more than a year and whose economic interest is in India, but it's a foreign company, the production of that foreign company in India, is it India's GDP? Absolutely. अगर Facebook, which is a foreign company, अगर Facebook भी एक साल से ज्यादा यहां रहेगा and Facebook का economic interest यहां पे है, then we mean that Facebook जितना भी प्रोडक्शन करेगा, all of that is India's GDP. एप्पल जितना भी प्रोडक्शन यहां करेगा, ऑल ऑफ दैट इज इंडियाज जीडीपी। वील कंसिडर दैट आवर नेशनल फाइन बिकॉज इट हैपेंस इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी इन आवर फाइनेंशियल ईयर बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट। सो जीडीपी के लिए देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यू कैन बी अ फॉरेनर प्रोड्यूसिंग थिंग्स इन इंडिया, दैट इज इंडियाज जीडीपी। समझ रहे आप? तो दैट इज, इट कैन बी अ सिटीजन, इट कैन बी एन एलियन। नॉर्मल रेजिडेंट कैन बी एन इंडिविजुअल, कैन बी एन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। कैन बी एन इंडिविजुअल, कैन बी एन इंस्टीट्यूशन। Now see, pay attention. देखिए, we have, this is India. इंडिया में we have a पाकिस्तान एम्बेसी। ठीक है, पाकिस्तान की एम्बेसी में दिस प्लेस जो मैंने यहां पे बनाई, इज इट इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी? ये वाला? नो, इट्स नॉट। सो वट एवर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड हियर इज नॉट अवर जीडीपी। बट लेट्स सपोज पाकिस्तान एम्बेसी हैज हायर्ड अ लोकल एम्प्लॉई, हैज हायर्ड अ लोकल एम्प्लॉई, हायर किया किसी काम के लिए। नाउ पे अटेंशन टू द ट्रेजेडी ऑफ दिस लोकल एम्प्लॉय। ये लोकल एम्प्लॉय रहता दिल्ली में है, तो रहता कहां है? Where does he live? He lives in India. Where does he work? He works in Pakistan. तो ये रोज बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाता है, works in the Pakistan, then comes back. He is only fulfilling one condition, that is, he is living in India, but his economic interest is where? In Pakistan. काम तो, अर्निंग तो वहीं हो रही है ना। Now tell me, what would you consider this particular individual? Is he an Indian resident or a Pakistani resident?
he will be considered as an Indian resident. तो अगर कोई फॉरेन एम्बेसी में भी काम कर रहा है, no doubt he is going to a foreign land and earning there, will consider him a resident of India. ठीक है, right on this point. Local employees working in foreign embassies. Local employees working in foreign embassies. Working in foreign embassies. Working in foreign embassies. Not only that, you know, we also have, बस इतना ही, we also have examples like people from India. In the morning, they cross the border and go to Nepal. Nepal में दुकान लिया है, they opened a shop there, they earn there, they spend there, and शाम को they come back to India. ऐसा भी possible है. So this kind of a person who is living in India but working in Nepal is an Indian resident. from India का resident बोले, ठीक है. We have also, जैसे मैंने खुद I know people जो खुद हैदराबाद में रहते हैं. हैदराबाद में they have a home in Hyderabad because my second home is in Hyderabad. I know people in Hyderabad where they live in Hyderabad, they have a home in Hyderabad but they work in Delhi. तो हर सुबह वो फ्लाइट लेकर दिल्ली आते हैं और शाम को घर जाते हैं वापस हैदराबाद, दिल्ली में काम करते हैं. You can understand कि हर दिन का the flight costs of around 30-40,000 every day. So you can imagine what would be the package of that individual. जो हर दिन फ्लाइट्स में 40,000 रुपए लगा रहा है. I met an individual like that from Hyderabad. He had a specific card. His airline people, they give them a card to frequent travelers होते हैं. And they don't have to purchase tickets and all. They don't have to be in the queue. उनका अलग सिस्टम जाता है. They directly go inside and directly go out. तो उनका एक अपना golden card होता है. This is some people, they work somewhere else and they live somewhere else. तो ऐसे लोग जहाँ रहते हैं वही लोग क्या है, वहाँ के रेजिडेंट. ठीक है. So people living in India, working in Nepal are India's residents. तो वो हो गया आपका रेजिडेंट वाला खत्म. Now I want you to go back to the definition and read that definition again. GDP. Money value of all final goods and services produced in a financial year in the domestic territory by the normal residents. Clear hai? Is it clear? This is your GDP. Nikita, economic interest means your earning, your spending, your accumulation, all of that means economic interest. Chaliye, so this is your GDP. अब GDP में एक हो गया कवर अमाउंट. There is one part जो अभी तक I have not addressed. That is gross. That is gross. So this is the last keyword of GDP. That is gross. Let's see what gross is. You know, this is India's domestic territory. Financial year 24. Financial year 24, what do I mean by financial year 24? 23, 24. India's domestic territory, financial year, and we have to take final goods, or final goods का क्या लेना है? Money value. And domestic territory mein the production has to be done by normal residents. There is no requirement of being a citizen for the production in GDP. Now, financial year 23-24 mein I have to calculate the production, and I calculated some production and I got some production of goods and services. Concept of GDP tells me you take this production at a gross level. Gross क्या हो गया? Gross simply means total without any deduction. Total without any deduction, that is gross. Don't deduct anything. Don't separate anything. Just take the gross production in the country. So jitna bhi final goods and services are being produced in the country, just take them all. That means gross. Don't deduct anything from it. तो हमने इंडिया की domestic territory में all the production of final goods and services was taken into consideration, that is GDP. We have not deducted anything from it. That means that becomes gross domestic product. Now our second topic is net domestic product. Net domestic product. Now pay attention. Why do we need a net domestic product if we already have gross domestic product? Simon Kuznets gave the concept of GDP to help us do what?
to help us calculate our income. And once we have our income, we can calculate economic growth. Growth nikal jayega. But the problem is, the concept of GDP is vague. We really don't understand ki how is it the income of the country. Why? Because in this GDP, you have included some production that had to be excluded. आपने gross में ले लिया सब कुछ. You had to exclude some of it, but you included all of it. So GDP is not the actual measure, the pure measure of national income. GDP is not a pure measure. You need the purest measure of national income. वो GDP नहीं दे सकता आपका. Why? Because GDP only takes the gross value. ये gross production लेता है. You need the actual production. Now see, what is the difference between gross and net? पहली बात मैं बता दूं, net domestic product, also known as NDP, is again the production, is again in the domestic territory. Same definition जो अभी आपने देखी. Again, is the money value of all final goods and services produced in the domestic territory by the normal resident. Same definition. जो GDP में आपने लिखा, you can write the same definition for NDP. Just उसमें एक चीज ऐड करना है. उसमें gross की जगह क्या लिखना है? Net. Now I'll explain कि आपने net क्यों करना है इसको और क्या काटना है. What do you have to deduct? तो when you deduct something from gross, you deduct something from gross, it becomes net. तो GDP में से आपने कुछ निकाला, it becomes NDP. DP सेम है. यहां पर भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहां पर भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट. बाकी दिस वी हैव द सेम डेफिनेशन, पर समथिंग हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस. नाउ व्हाट डू वी डिडक्ट फ्रॉम ग्रॉस? बी वेरी अटेंटिव, ये फिर समझ नहीं आएगा. अगर आप 5 बार भी पढ़ोगे किताब से, you'll have to study the 6th time to understand कि ये क्या सिस्टम है. Gross में से what do we have to deduct to come to net, and why do we have to deduct it? Now pay attention. For example, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है. You will not get any question from it. ठीक है? But I just want to cover your basics ताकि आपको clear cut समझ में आ जाए कि GDP क्या है. For example, this is the domestic territory. This class is the domestic territory. इस domestic territory में whatever is being produced, if it is a final good, that is my GDP. Final good होना चाहिए. इसी साल has to be produced in this financial year by the normal residents, and this is the domestic territory. Whatever is being produced is my GDP. But we always see that जो भी country में production हो रहा है, whatever is being produced in the country, some part of that production is actually the production of new goods and services. नया लैपटॉप, नया पेन, नए कपड़े, नई गाड़ियां, new goods and services are being produced. That's fine. It is part of GDP. But there are other part of production which in reality are only being produced to help as a repairing in the previous production. मान के चलिए 10 years back I produced a machine, so it was part of that GDP of that year. So that machine is not being used only in that year, it is being continuously used in the last 10 years. तो आज भी मैं वही machine इस्तेमाल कर रहा हूं. But this year what happened, one part of that machine got dysfunctional. I need a new part. लेकिन जो प्रोडक्ट है, जो मशीन है, वो पुरानी है. पुराने प्रोडक्ट पर मुझे एक स्पेयर पार्ट चाहिए और वो स्पेयर पार्ट मैं आज बनाऊंगा. So in this year we eventually produce some production, some parts which in reality go to the repairing of the previous production, that help in the repairing and maintenance of the previous production. What I do want to do is I want to deduct that particular production from the GDP जो पीछे जा रहा है. I only want to take whatever new is being produced. That becomes my net. Why do I subtract that part? वो भी तो इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रहा है. Why do you want to subtract that part that goes into the repairing and maintenance of the previous production? Because that part is in reality a loss to the economy. Why? Because machine जब खराब हुई तभी नया पार्ट बनाना पड़ा. वो खराब जो हुई, that is a loss to the economy.
आई वांट टू कैलकुलेट कि इकोनॉमी में लॉस कितना हो रहा है. दैट लॉस टू द इकोनॉमी इज नोन एज depreciation. Is known as depreciation. So what I have to do is I will take GDP minus depreciation to take my net domestic product. Net domestic product. GDP minus depreciation. Is it clear? Clear हो रहा है? GDP minus depreciation is net domestic product. Depreciation simply means wear and tear. जो भी आपके पुराने गुड्स है उनका wear and tear. Wear and tear. Depreciation is accounted for annually. Annually निकाली जाती है हर साल. Are given by Ministry of Commerce and Industry. Depreciation rates are given by Ministry of Commerce and Industry. Depreciation rates are given by Ministry of Commerce and Industry. Ministry of Commerce and Industry. So depreciation is a loss to the economy. तो ये लॉस आप निकालेंगे. अब देखिए, I gave you an example that in this year 2023, 10 years back in 2013 we produced a machine. That machine is continuously being used till now, but in 2023 a part of that machine got depreciated, खराब हो. So machine की depreciation होकर एक part खराब. So you need a new part. So we created a new part in 2023 that goes to the previous production. This part is the depreciation. इसको आप काटना चाहते हैं, ठीक है? तो ये हटा दो, आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा. नाउ depreciation जो कॉन्सेप्ट है, it also can be used as a tool of economic policy. इसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हो. Now, for example, I don't know whether you know this or not. There was Woodland जो शूज है 10 साल पहले, the shoes that Woodland used to produce वो खराब ही नहीं होते थे. You would have same shoes for the next 10 years और वो कुछ खराब नहीं होता था. I got a Woodland shoe, my father got it for me, I guess in class 8, और मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया, मैं पीजी करने लगा और वो चल रहा था, खराब ही नहीं हुआ. और मैं इतना तंग हो गया, I got a blade और मैंने उसको नीचे से काट दिया, जस्ट माई फादर मुझे नया जूता ला कर दिया. तो वुडलैंड के शूज वुड नॉट डेप्रिशिएट सो फास्ट, बट उसकी वजह से क्या हुआ कि आपने शूज बेचा, यू जस्ट वुडलैंड सोल्ड शूज फॉर द कस्टमर, और कस्टमर ले रहा है, 10 साल में वापस ही नहीं आ रहा है, और 10 साल के बाद फिर से आ रहा है खरीदने. तो उसकी वजह से वुडलैंड के सेल्स कम हो गए. So what they did is they increased the depreciation of their shoes. Today, if you get the Woodland shoe, you'll only have to use it for the next 3-4 years. 3-4 साल में वो खत्म हो जाएगा पूरा. Depreciation has been used as a tool of economic policy to increase the sales. जैसे ये फैन है, उषा फैन की depreciation रखी गई है 10%. तो 10% हर साल वो depreciate होगा. तो in 10 years 100% depreciate होगा, तो 10 साल में आपको फैन बदलना पड़ेगा. ये रखा गया है. Buildings have a depreciation of 1% a year. तो 1% depreciate होगा. In 100 years building बदलनी पड़ेगी आपको. So it is being used like that to increase the sales. In 2006, I guess February 2006, we had the sales of heavy vehicles. Heavy vehicle हो गया, these big vehicles that have more than 6 tires. So in India, the sale of heavy vehicles was very low. Why? Because same vehicle was being used for the next 15 years.
So what the government did is they allowed these companies, these automobile companies, to increase the depreciation of heavy vehicles. So increase the depreciation of heavy vehicle. Heavy vehicle आपका 6-7 साल में खराब हो जाता है, you have to get a new vehicle. तो ये इस्तेमाल किया जा रहा है for economic policy as well. So this is the concept of depreciation. तो NDP हो गया आपका. तो we covered the GDP. GDP से माइनस क्या किया आपने? Depreciation. You got net domestic product. According to you, which one is a more appropriate of national income of this year? GDP or NDP? NDP is more appropriate, is a more pure form. ठीक है, थोड़ा प्योरर है कंपेयर टू जीडीपी, बिकॉज जीडीपी में ग्रॉस लिया जाता है, इसमें आप डिप्रिसिएशन हटाओ, बचेगा जो बनेगा नेट. क्लियर? एनडीपी के बाद वी हैव द थर्ड फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम, वी कॉल इट जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस national product. Gross national product. Gross national product. Gross national product क्या है? Money value of all final goods and services produced by the nationals of the country. Right now, money value of all final goods and services produced in a financial year by the nationals of the country. By the nationals of the country. By the nationals of the country. So this is India. Now see. Money value, is the concept of money value clear to you? आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? ये आप दो ही केस में नहीं बोलोगे, या तो आपको सब कुछ समझ आ रहा है, या तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. These are the only two cases when you don't speak up. I don't know which one, of the cases. All clear? ठीक है. अब समझ आ रहा है आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूं? अभी हमने शुरू भी नहीं किया, ये धीरे धीरे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो जितना आप साथ साथ इंटरेक्टिव बनाएंगे उतना मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में. बताइए, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी वैल्यू क्लियर? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल ईयर डन. द ओनली डिफरेंस इज व्हाट? बाय द नेशनल. हैव आई रिटन एनीवेयर डोमेस्टिक टेरिटरी? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी इन जीएनपी. डोमेस्टिक टेरिटरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. It tells you whether you are in India, whether you are anywhere in the world, you just have to be a national of India. National, NCERT बोलती है national are citizens. NCERT क्या बोल रही है? Nationals are the citizens. हालांकि अगर आप कोई किताबें पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव जॉर्ज मैंक्यू की एक किताब आती है इकोनॉमी पर. He has considered nationals to be residents, but we'll only go with what the NCERT says. NCERT considers nationals to be citizens. So gross national product क्या है? Gross national product means money value of all final goods and services produced in the financial year by the citizens of India. अब वो citizens इंडिया के अंदर भी है और इंडिया के बाहर भी है. All over the world, दुनिया का हर चौथा पांचवा बंदा is an Indian. अब जहां पर भी दुनिया में आप है, if you have an Indian passport, whatever you produce, wherever you produce, that is our GNP. You produce that in America, that is our GNP. You produce that in Japan, that is our GNP. आप जहां भी प्रोड्यूस करो, आपकी प्रॉपर्टी लंदन में, लंदन के अंदर आपकी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी पर यू आर अर्निंग अ रेंट इन लंदन इन यूरो, whatever you are earning there is our GNP. Why? Because you are a citizen of India. समझ आ रहा आपको? It has not like practical sense कि वो पैसा इंडिया आना चाहिए, not like that. वो सिटीजन है हमारा, वो जहां भी पैसा कमा रहा है, that is our GNP. Now pay attention. How do you calculate this? So we have two concepts. एक तरफ से GDP, एक तरफ से GNP. GDP has a concept of where the production is happening. It has a concept of location.
जीडीपी बोलता है चाहे आप सिटीजन हो या नहीं हो, आप कोई भी हो, प्रोडक्शन हैज टू हैपन हियर in our domestic. It has a concept of a location, spatial dimension. It wants to cover a spatial aspect कि कहां पे हो रहा है. GNP has no spatial aspect. GNP does not talk about where the production should happen. GNP talks about who is doing the production. GNP talks about who is doing the production. It has to be whom? The wherever you are producing. We don't have a concept of domestic territory in GNP. आप जहां पर भी है, you have to be a citizen, or whatever you produce is our GNP. समझ आ रहा है आपको? Now see, what do we add? Now see, India में whenever we talk about GNP, we calculate it from GDP only. ठीक है, GDP से ही निकाला जाता है. For example, pay attention. We calculated GDP first. So GDP was our domestic territory के अंदर जिसने भी प्रोडक्शन किया. Tell me, does it include citizens as well as foreigners? GDP में आप बताइए. Yes, कैसे? किसमें काम करता है? How are aliens included in GDP? Yeah, जो भी इंडिया का रेजिडेंट है, इंडिया में रह रहा है, even if it's a foreign, तो हम क्या बोलेंगे? That's part of India's GDP. It has nothing to do with embassies. Now see, citizens and aliens. तो GDP में whatever we have produced is the production of citizens and aliens. But from GDP we now have to calculate what? GNP. अब GNP में we only have to include citizens. We have to exclude aliens. So what we'll do first is we'll take into consideration the citizens जो हमने यहां पर ऐड किए GDP में. We will have to add something from the citizens abroad, and we will have to subtract the aliens. है कि नहीं? So what we'll do is some money is being earned, is being produced by the citizens abroad, that has to be added, and some money that was being earned by aliens in India, that has to be subtracted. You will get the GNP. समझ आ रहा है? एलियन को बाहर निकालो, सिटीजन को ऐड करो. अब सवाल है, सिटीजन अब्रॉड का कौन सा इनकम ऐड करना है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. What kind of income do you add in the GNP? Incomes are of two types. पहले आप एक काम करिए, लिखिए पहले. So we have GNP is equal to GDP plus income earned by Indians minus income earned by Indians abroad लिखना minus income earned by foreigners in India. So let's suppose my GDP is 100 plus income earned by Indians abroad is 50 minus income earned by foreigners in India is 40. So can I say it is 100? 50 minus 40 is how much? 10. अब ये जो चीज है आपका ये 10, can I say it is net income from abroad? कह सकता हूं मैं net income from abroad. Net income from abroad. Net income from abroad. जल्दी हो गया? तो our
Formula is like this. GNP is equal to GDP plus NFIA, net factor income from abroad. Net factor income from abroad. Now see, you have to add net factor income. Net factor income क्या है? इंडियंस ने बाहर कितना कमाया और फॉरेनर्स ने इंडिया में कितना कमाया, उसका नेट निकालो. दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. Now pay attention. I am a citizen of India here. Now the citizen of India is earning some income overseas. बाहर कमा रहा है. And he is earning this income in terms of wages. जॉब है उसका. In terms of rent, उसकी प्रॉपर्टी है. In terms of interest, उसका कोई इंस्टीट्यूशन है, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन लाइक अ बैंक. इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, उसकी कोई कंपनी है. सो इफ द सिटीजन ऑफ इंडिया इज अर्निंग हिज मनी, इज अर्निंग हिज इनकम इन टर्म्स ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, we call such an income as primary income. Such income is known as primary income. So citizens can earn primary income. But citizens who are overseas can also have secondary income. Secondary income. Secondary income क्या हो गया? Gifts, donations, remittances. Suppose there's a person abroad, he's not sending his money to country. वो पैसा जो उसने प्रॉफिट में कमाया है, वो क्या कह रहा है? वो रेमिटेंस भेज रहा है कंट्री में टू हिज एल्डरली पेरेंट्स. उसको हम कहते हैं रेमिटेंस, प्राइवेट रेमिटेंस. So these gifts, donations and remittances are secondary income. Now my major जो part है आपका GNP का, so when you have to add things to GDP to calculate your GNP, which income do you add? Do you add the primary income? Do you add the secondary income? Or do you add both of them? So in GNP we only add primary income, we ignore secondary income. Secondary income add नहीं होता है. Write down. Ignore, GNP ignores the secondary income. GNP ignores the secondary income. Yes, Indians abroad mean non-resident Indians. What about the Indian residents working in international institutions like World Bank? Those people that are working in international institutions, and if that international institution is in India, they will still be considered as the residents of India, and their production will be part of India's GDP. But that World Bank, that international institution, would not be Indian resident, that would be a resident of the international territory. Okay. So GNP ignores what? Secondary income. Acha, tell me, if we have a citizen abroad who is earning some money by selling second-hand goods, should that be part of this year's GNP? If there is a citizen outside who is earning his income by the sale of second-hand goods, should that be part of the GNP of 2023-24? We have to calculate the GNP of 2023-24. So we have a citizen abroad who is earning his income by selling second-hand goods.
that were produced in some other year, would that income be part of our GNP? No. How? GNP में क्या है? प्रोडक्शन लेना है ना. It is the money value of all final goods and services produced in a financial year by the citizens, by the nationals. तो आपने प्रोडक्शन करना है इस साल. Just look at the definition GNP का, उसको पढ़ो जरा. GNP is the money value of all final goods and services produced in a financial year by nationals of the country. So if you're selling something which is a second hand commodity outside, you have not produced that commodity. That is a second hand commodity. और second hand transactions are not included in national income. कितनी बार बोला मैंने आपको? कैसे? बिल्कुल, पर प्रोडक्शन नहीं है ना. प्रॉफिट हो रहा है, बट किससे हो रहा है? उस कमोडिटी से हो रहा है जो प्रोड्यूस ही नहीं किया आपने. यू हैव टू इग्नोर दैट. प्रॉफिट है, बिल्कुल है, मगर उस कमोडिटी का नहीं है जो आपने प्रोड्यूस किया, उस कमोडिटी का जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुकी है. दैट हैज टू बी इग्नोर्ड. वरना वैसा तो जीडीपी में भी आएगा. जीडीपी में भी आपने इनकम कमाया, आपने प्रॉफिट कमाया. जैसे व्हेन यू कैलकुलेट जीडीपी फ्रॉम द इनकम मेथड, यू हैव टू ऐड प्रॉफिट्स. जीडीपी में भी प्रॉफिट ऐड होता है, बट उसका प्रॉफिट ऐड होगा जो आज प्रोड्यूस हुआ है. उसका प्रॉफिट ऐड नहीं होगा जो पुरानी प्रोडक्शन है. ठीक है, इग्नोर दैट. वो है प्रोडक्शन है, वो आपका प्रॉफिट है, पर इग्नोर दैट. इट हैज टू बी इग्नोर्ड. राइट डाउन. जीएनपी इग्नोर्स the incomes from GNP ignores the income from the sale of used goods. The sale of used goods. Mohammed has a question: a consultant in India getting remittances as salary. So if you are getting salary, that is not remittance, that becomes your wage. वो तो salary है ना, फिर वो आपके primary income में आएगा. If you modify it and you have added some other products to it, other let's say components to it, so that value that has been added to it, that new value would be part of GDP. But the used good, the old good would not be part of GDP or GNP for that matter. तो ये होगा आपका GNP. Finally, we have NNP. NNP, Net National Product. Net National Product. Net National Product. Now, sorry, Ashwini has a question here. Ashwini has said that, sir, GNP, you have said that GNP is GDP plus net factor income from abroad. So, is it always positive? That is the question of Ashwini. I should not, this is a simple question. You already know that GDP में net factor of income असल में क्या है? You add the income of citizens, you subtract the income of aliens, foreigners. So in the previous example, our GDP was 100, but let's suppose the income from citizens is 50, but the income from abroad, from aliens which are earning in India, is 60. What would that be? Minus 10. तो ये क्या हो गया? GDP हो गया आपका 90. It can also be minus. कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. वो डिपेंड करेगा कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है. It could be positive, it could be negative, and in fact, it is negative for India. इंडिया के पर्सपेक्टिव से GNP is equal to GDP minus net factor income from abroad. This minus is for India. So you can clearly see that हम बाहर से ज्यादा पैसे नहीं कमाते जितना हम यहां कमाते हैं. So for India, we have minus NFI.
minus NFIA. Now see, can I say, अब थोड़ा इसको let's extend it for some time. So let's suppose GNP of India is GDP minus NFIA. So if GDP is 100 minus करो 10, कितना हो गया 90. So can I say India's GNP is less than GDP? कह सकता हूं GDP कितना, GNP कितना. So India's GNP is less than GDP. It has been true for some time. तो इंडिया का GNP कम है GDP से. Now there are countries जिनका GNP कम होता है GDP से, there are countries जिनका GNP ज्यादा होता है GDP से. For example, we have countries like Japan. Now tell me, Japan में बताइए, would there be more production in a country inside the domestic territory, that would be the GDP, or would there be more production by Japanese companies all around the world, that would be GNP. जापान का GDP ज्यादा होगा, that means production in the domestic territory, और GNP ज्यादा होगा all over the world. Very good. जापान का GNP is more than GDP. Okay, because Japanese companies are there producing things, producing commodities all over the world. We have another example. You can take another example of Ireland. Ireland लिखिए. Ireland. Ireland is a small country, right? So whatever is being produced in the domestic territory would be GDP, and there are Irish companies outside producing, that would be GNP. तो बताइए, what would be more for Ireland? GDP, GNP? GDP? GNP? Cross. What would be more for Ireland, GDP or GNP? आप जो लास्ट पे. GNP. Why? You said obviously. Huh? No, it does not depend on that. That's what I'm asking. Is it greater or is it less? Use your brains. You can know that. ऐसे थोड़ी है कि सब कुछ जो पढ़ा है वही एग्जाम में आता है. Okay. Have you heard about any Irish company producing commodities all over the world? कुछ सुना है ऐसा? कुछ खास तो नहीं सुना है. होंगी, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है. Not so popular, not so famous. But I'll tell you, if you have basic understanding of the multinational companies, आपको पता है गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? गूगल का यूरोपियन हेडक्वार्टर इज इन आयरलैंड. माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर आयरलैंड. एप्पल का हेडक्वार्टर आयरलैंड. एक्सेंचर का हेडक्वार्टर आयरलैंड. एवरीबडी गोज टू आयरलैंड. You know why? Because Ireland में taxes. So all these multinational corporations go to Ireland in their domestic territory and produce it from there. And tell me, GDP ज़्यादा होगा GNP? GDP is much higher than GNP. समझ आ रहा है? That is because of taxes. इसीलिए इंडिया को बोला जा रहा है टैक्सेस कम करो अपने. इंडिया हैज अ टैक्स ऑफ अराउंड 24% एंड फॉरेन कंपनीज के लिए तो 40%. सो वी इन इंडिया, these foreign companies have to pay 40% of their profit to the Indian government,
एंड इन आयरलैंड दे ओनली हैव टू पे 12.5%. तो वो कहां जाएंगे? आयरलैंड ही जाएंगे. वो क्यों आएंगे इंडिया? दिस इज हाउ आयरलैंड हैज हायर जीडीपी देन जीएनपी. समझ आ रहा है आपको? समझ आया सर? जरा एक और क्वेश्चन अब बताओ मुझे, खुद से सोचो जरा. जीडीपी ज्यादा होगा या एनडीपी? क्यों? Depending upon country situation. Yeah, tell me how. You have seen the example like Japan. Yeah, I'm not giving an example of GNP. It is NDP. Acha, what is NDP definition formula? NDP is equal to gross minus depreciation. My question in reality is, if GDP is 100 and something is getting subtracted from it, let's suppose 20, that becomes 80. So NDP क्या हो गया? Less than GDP. So GDP is more than NDP. मगर question is depreciation always deducted? Can there be a situation where there is no depreciation? क्या ऐसा कभी हो सकता है? There is no depreciation, therefore 100 minus 0 is 100, therefore NDP is equal to GDP. Can there be a situation where NDP is equal to GDP, where depreciation is 0? ऐसा कोई commodity बना सकता है कोई जो कभी खराब ना हो? Not possible. ठीक है? You always have depreciation. So NDP is always less than GDP. हमेशा. True for every country. ये चीजें खुद करनी है. अब तो रिलेटेड, अब इसमें से कितने भी क्वेश्चन बनेंगे, अब तो डू इट योरसेल्फ, खुद सोचना है. यस मोनिका, यू आर राइट, वेरी गुड. Stikholen, sorry, I'm not able to pronounce your name correctly. Ganesh, Arunima, just tell me the states you're from. Online students, इंडिया के कहाँ से स्टेट? यूटी से हैं आप? महाराष्ट्र, यूके, उत्तराखंड, राजस्थान, मणिपुर, एमपी, अरुणाचल, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, बिहार, हरियाणा. क्लास में है कोई बिहार से? और बाकी कहां से? कर्नाटक से, यूपी, महाराष्ट्र, यू, और कौन? राजस्थान, राजस्थान, आंध्रा, केरला, कश्मीर. कश्मीर से कहां से? लद्दाख. We have a Funsuk Wangadu in the class also. ठीक है, तो NNP फोर्थ डिमेंशन है. व्हाट इज NNP नाउ? नेट नेशनल प्रोडक्ट. नेट नेशनल प्रोडक्ट किससे मिलेगा? नेट कहां से मिलता है हमें? ग्रॉस से. तो विल सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम GNP. तो यू हैव NP, ग्रॉस में से सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, यू गेट NNP. ये क्लियर है ना? इज एग्जैक्टली द सेम थिंग आई डिड विद जीडीपी. जीडीपी से माइनस किया डेप्रिसिएशन, यू गॉट एनडीपी, है ना? यहां पर भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस में से डी निकला, मिला एन. इन द सेम वे यू हैव नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस में से डी निकालो, यू गेट नेट. सेम थिंग. नाउ दिस एनएनपी, थोड़ा बहुत ध्यान लगाइए इस पे, एनएनपी पे. Can I write it like this? You have NNP is equal to GN
GNP minus depreciation. So it can be said that it is GNP का खुद का फॉर्मूला क्या है? GNP is equal GDP plus net factor income from abroad. So you substitute that here. So GNP is equal GDP plus net factor income from abroad minus depreciation. So in reality it is GDP plus NFIA minus depreciation. That is your NNP. But in the case of India, it would be NNP is equal to GDP minus NFIA minus depreciation. Because I already told you India का NFIA क्या है? Minus में. So that is India. For India. We don't include secondary incomes in national income. Now pay attention. According to NCERT, NNP is the purest form of national income. Purest form. Primarily NNP at FC. NNP at FC. FC क्या है? आप बस लिखो, मैं बाद में समझाऊंगा. I'll explain it later on. NNP at FC is the purest form of national income. Purest form of national income. Now why is NNP the purest form? क्या NNP में do we have depreciation in NNP? क्या उसके अंदर depreciation है या निकाली है? We have excluded depreciation. So it is the net form. Have we excluded the production of aliens from NNP? Yes. Now pay attention. हमारे पास चार चीजें हैं. We have GDP, we have NDP, we have GNP, we have NNP. Pay attention. GDP में से माइनस क्या करेंगे? Depreciation. We get NDP. GDP को प्लस क्या करेंगे? NFIA. We get GN. GNP में से माइनस क्या करेंगे? Depreciation. We get NNP. Now pay attention. Gross domestic product is not the purest form. Why? Because इसमें gross है. And secondly, इसमें domestic product है that includes the production of aliens. It is not the purest form. Then we'll go to NDP. NDP में net है, that is good. मगर उसमें क्या है साथ में? Domestic. Domestic includes the production of aliens. Again, not the purest form. Then we have GNP. GNP includes the production of citizens only, nationals. But it is a gross value. Again, not the purest form. And finally, you have NNP. It is the net value and only of the nationals. That becomes the purest form. Clear? NNP is equal to gross national product minus depreciation. You subtract depreciation from GNP, you will get NNP. ये तो हो गया आपका साइमन कुजनेट के चार. नंबर 5 वी हैव पर कैपिटा इनकम, PCI. पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम सिंपली मीन्स इनकम पर हेड. एक इंसान का एक साल में कितना इनकम है? सिंपल. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय ऑन एन एवरेज अर्न्ड बाय एन इंडियन? नाउ पर कैपिटा इनकम की जो फॉर्मूला है, इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन एनएनपी, टोटल एनएनपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. तो सारा का सारा एनएनपी लो आप, नेट नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री गिव्स यू per capita income. Per capita income.
per capita income. In 2022-23, I'll give you the data. 2022-23, the population was around 138.3 crores, and NNP, per capita crores, and per capita income was 1.7 lakhs. 1.7 lakhs. On an average, इंडिया में एक इंसान 1.7 लाख एक साल में कमाता है. Earns around 1.7 lakh a year per capita income. It is an average, right? Now, this 1.7 lakh is at current prices. We only have per capita income of 98,000 at constant prices. Per capita income is 1.7 lakh at current prices and 98,000 at constant prices. अब ये current constant क्या होता है वो अभी आएंगे उस पर. It is a separate topic. In fact, our next topic is current constant only. But first understand, ये हमारा है current पे, ये हमारा है constant पे. Now see, budget 2023 has made an observation. ये लिखा आपने? इसको स्टार मारिए. हाँ. पॉपुलेशन हमारा 2022-23 में कितना? 138 करोड़ और per capita income is 1.7 lakh and per capita income is 98. These are two different per capita incomes. This per capita income is at current prices. This per capita income is at constant prices. ये current constant I have not taught you अभी तक, ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा. फिलहाल के लिए बस आप इतना समझो, we have a per capita income either 1.7 either 98. फिलहाल आप इतना ही समझो, मैं ये करंट कॉन्स्टेंट अभी पढ़ाऊंगा आपको. फाइन, इसको स्टार मार दो, इसको अलग से पढ़ेंगे. नाउ सी, बजट का मैं ऑब्जर्वेशन बताता हूं. यू कैन यूज दिस एज एन इंट्रोडक्शन इन योर मेंस आंसर. राइट डाउन. बजट 2023. बजट 2023 says that since 2014, this is the year when we had the new government at the center. Since 2014, the per capita income has more than doubled. Has more than doubled to 1.97 lakhs. Has more than doubled to 1.97 lakhs. 1.97 लाख. ये बोला है बजट 2023 में. बट यहां पर मैंने क्या लिखा? पर कैपिटा इनकम इन 2022-23 कितना है? 1.7. If you take the higher one, it is still 1.7 only. This is not me saying it, ये गवर्नमेंट का खुद का डेटा है. लेकिन यहां से बोल रहे हैं कि 1.97 है. So there is a discrepancy here. मॉस्पी का डेटा बोलता है it is only 1.7. Ministry of Statistics and Program Implementation has released the data for 2023. उन्होंने बोला it's only 1.7. पर बजट 2023 ने बोला कि 1.97 है. तो इसमें एक डिस्क्रिपेंसी है. वी हैव टू वेट फॉर द न्यू डेटा फ्रॉम मॉस्पी. शायद उसमें ये इंक्रीज हो. बट फॉर नाउ मॉस्पी का एक्चुअल मिनिस्ट्री का डेटा है इट इज ओनली 1.7 लाख पर हेड इन इंडिया. चलिए नाउ सी, ये तो हो गया आपका. देयर इज some miscellaneous terms. ये भी यहां पे कर लेते हैं.
Miscellaneous terms. You'll get these terms in the NCERT class 12. So I don't want you to worry about कि वो topics आपकी cover नहीं हो रहे, तो मैं NCERT साथ साथ करा रहा हूँ. So in your NCERT class 12, you have miscellaneous terms like personal income, personal income, personal income, personal income. Now, NCERT says that it is personal income. क्या होगी? Now see, we covered the national income of the country. Sara, you either take it from GDP, you take it from GNP, you take it from NDP, you take it from NNP. ये सब आपके national income है. All of them are the forms of national income, but one of them is the purest form. ठीक है? But for the sake of simplicity, we will only be taking GDP as the national income for the sake of simplicity. जब भी मैं national income बोलूंगा आप समझ लेना GDP की बात कर रहा हूं मैं. लेकिन we already understood कि NNP is the purest form. So we already calculated the national income. Now there is another term, personal income. Personal income क्या है? Personal income is the part of national income. Right now, it is the part of national income. Part of national income received by the households. Received by the households. Part of the national income received by the households. Received by the households. वो national income का वो हिस्सा which is received by a specific household. एक household ने जो receive किया. Received. Received को underline. Received. The money is received. Now see, how do you calculate that? So the name only, the definition suggests that personal income is part of national income. So personal income is equal to national income minus part of national income है ना? So national income minus, will subtract something to the national income. What do we have to subtract? We will subtract that part of the national income which is not received by the household. उसको subtract करेंगे. For example, you have companies. You have companies. Company has earned a profit of 100 crore in a year. 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया एक कंपनी ने. लेट्स सपोज रिलायंस ने कमाया 100 करोड़. अभी 100 करोड़ में 60 करोड़ will be distributed to the people in the form of wages, salaries, profits, interest. दे रहे हैं. 60 crore is distributed profit. So whenever you are distributing this 60 crore to the shareholders, to the board of directors, to the employees, आप distribute करें. Is this distributed profit received by the household? है ना? Is this distributed profit, 100 crore is the total profit of Reliance. Out of this 100 crore, 60 crore they have distributed. Is this distributed profit received by household? हाँ? मैंने किसी को सैलरी दी, वो पहुंच गई ना उसके घर. It is received by the household. मैंने किसी को प्रॉफिट का हिस्सा दिया, वो पहुंच गया उसके घर. So the money that you are distributing is received by household. But there is a profit का share, कितना? 40 करोड़, जिसको हम कहते ही है undistributed profit. Company does not distribute it. वो अपने पास होता है. So this undistributed profit is not received by the household. So what we'll do is we will subtract from national income the undistributed profit. Undistributed profit. Undistributed profit would be subtracted from the national income. समझ आ रहा है? Why are you subtracting this? Because it is not received by the household. Minus. Now see, I give an example of 100 crore. Is 100 crore mein I divided it into 60 and 40. But before we divide it into 60 and 40, of this 100 crore, some money directly goes to the government as tax. ये जो टैक्स गवर्नमेंट को गया,
Is it received by the household? जो टैक्स गवर्नमेंट ने लिया? No, it is received by the government, not by the household. We will have to subtract this tax amount also. So we'll subtract the corporate tax. Corporate tax. Why? Because it is not received by the household, it has been given to the government. So tax government ने लिया, money is not receiving, the government, the people have not received the money. ये तो हो गया आपका corporate tax. Then बोलिए. No, it's from the total amount. Total 100 crore के amount में से government takes the corporate tax. बचा कुचा is distributed and undistributed. Corporate tax मत लिखिए आप, मैं अलग से, मुझे इसमें आधा 1 घंटा लगेगा corporate tax पढ़ाने में, तो ये अलग से हमें fiscal policy में पढ़ना है. तो don't worry about कि taxes में कितना क्या है, किस पे लगता है. Pay attention. There is another thing that has to be subtracted. That is, this is the household. इस हाउसहोल्ड ने कुछ लोन वगैरह लिया होता है. सो व्हेन यू टेक लोन, देयर इज मनी दैट यू पे, है ना, एंड दिस मनी यू पे टू अ बैंक. सो यू आर मेकिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स. तो जो इंटरेस्ट पेमेंट आप दे रहे हो, इज इट रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड और इज इट गिवन बाय द हाउसहोल्ड? इट इज गिवन बाय द हाउसहोल्ड. ये भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. माइनस net interest payments. Net interest payments. So what you're doing is you're subtracting these things from the national income. National income minus undistributed profit minus corporate tax minus net interest payment. But there is one thing you have to add. Now see, आप ये सब्ट्रैक्शन किस में कर रहे थे? नेशनल इनकम में से. फ्रॉम नेशनल इनकम यू आर सब्ट्रैक्टिंग दीज थिंग्स, बट यू हैव टू ऐड वन थिंग टू द नेशनल इनकम जो अभी तक ऐड नहीं किया आपने. दैट इज, दिस इज अ हाउसहोल्ड. दिस हाउसहोल्ड हैज रिसीव्ड अ डोनेशन. दे हैव रिसीव्ड अ स्कॉलरशिप. दे हैव रिसीव्ड अ, लेट्स सपोज, gifts, or we can say transfer payments. Transfer payments. For example, मुझे कोई transfer payment मिल गया, मुझे कोई donation मिल गई. When you get donation from somebody, आप return में उनको कुछ देते हो? No, it's a donation. It's a one-way transfer. तो मैंने आपको donation दिया, तो दे दिया मैंने. I did not demand anything from you. It's a donation. One-way transfer. You don't have to necessarily produce something तब जाके मैं डोनेशन दूंगा. Does not happen. तो आपको डोनेशन चाहिए, मैंने दे दिया. इसको कहते हैं वन वे ट्रांसफर, ट्रांसफर पेमेंट. Whenever we provide a transfer payment, we do not look for production. हम प्रोडक्शन नहीं देखते हैं. That is why it's not part of national income. Because national income में क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन. पर जब हम ट्रांसफर पेमेंट लेते हैं उसमें प्रोडक्शन होना जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई गेट एन ओल्ड एज पेंशन. I've given my 60 years, 65 years of service. उसके बाद से अब गवर्नमेंट मुझे हर साल ओल्ड एज पेंशन दे रही है 90 साल की उम्र तक. So I'm 90 years old and government is giving me pension. Am I producing anything for that? No. It is a one-way transfer. तो जो पेंशन ओल्ड एज का मैं ले रहा हूं, it is not part of national income. Because national income के लिए it's important to produce. If you don't produce and you're still getting the money, it is not part of national income. The old age pension is entirely ignored from the national income. You are receiving the money from the government, but it is not part of national income. तो हम प्लस क्या करेंगे इधर? Transfer payment. Why? Because transfer payment are received by the household, but it is not part of national income. Like old age pension is received by the household, not part of national income. That is why you add it to the national income. Transfer payments like old age pension. समझा? This is the total formula for personal income. ये NCERT में दिया है. अब आप घर जाएंगे, you study the NCERT, सब समझ आएगा आपको. So NCERT में they have given the formula for what? Personal income is equal to national income minus undistributed profits minus corporate tax minus net interest payments plus ट्रांसफर पेमेंट्स. ठीक है?
नाउ सी, हो गया पर्सनल इनकम. सेकेंड वी हैव पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. नाउ डिस्पोजेबल एक हो गया पर्सनल इनकम. पर्सनल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम इज द इनकम दैट इज रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड्स. बट ऑल दैट यू रिसीव नेसेसरली वो सारा पैसा आपका नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई अर्न, यस निकिता, इट इज अ नेट इंटरेस्ट पेमेंट. तो इसमें वट एवर यू हैव रिसीव्ड एंड वट एवर यू हैव गिवन उसका नेट लेना पड़ेगा. नाउ सी, आई हैव रिसीव्ड सम मनी फ्रॉम एडुकेमी. तो उन्होंने मुझे लेट सपोज एक बैच का 10 लाख रुपए दे दिया, पर ये 10 लाख का 10 लाख मेरा पैसा नहीं है. A major chunk of it will be taken by the government. So all that the households receive, they don't have the say over all that money. It does not belong entirely to the family. A major part of it belongs to the government. इसीलिए personal income is received by the household, but personal disposable income belongs to the household. It belongs to the households. तो पर्सनल इनकम इज ओनली रिसीव्ड. जो आपने रिसीव किया, यू हैव टू सबट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम इट, देन यू गेट डिस्पोजेबल इनकम जो आपका पैसा है. नाउ हाउ डू वी गेट दैट? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस. व्हाट इज पर्सनल इनकम? इट इज रिसीव्ड बाय द हाउस. तो आई रिसीव 10 लाख, बट डू आई हैव टू पे टैक्सेस ऑन इट? यस, माइनस टैक्स पेमेंट्स. वो किसने ले लिया? गवर्नमेंट. इट डज नॉट बिलोंग टू मी. अगर मेरा चालान कट गया, आई हैड टू पे सम फाइन, वो फाइन भी किसने ले लिया? गवर्नमेंट. नॉन टैक्स पेमेंट. नॉन टैक्स पेमेंट लाइक फाइन्स. सो व्हेन यू सबट्रैक्ट टैक्स पेमेंट एंड नॉन टैक्स पेमेंट फ्रॉम पर्सनल इनकम, व्हाट यू गेट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. यानी टैक्स के बाद का पैसा क्या है आपके पास? जो टैक्स भरकर आपके पास पैसा बचा, दैट इज व्हाट बिलोंग्स टू यू. वो आपका पैसा है. यू कैन स्पेंड इट एज यू वांट. दैट बिकम्स डिस्पोजेबल इनकम, जिसको आप डिस्पोज कर सकते हैं. टैक्स पेमेंट लाइक इनकम टैक्स, नॉन टैक्स पेमेंट लाइक फाइन, दैट बिकम्स पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. We also, like we have the personal disposable income, ऐसे ही हमारे पास होता है national disposable income. National disposable income. National disposable income. National disposable income की formula as given by NCERT is NDI. अच्छा, tell me, it is national. जरा सोचो 2 मिनट. National disposable income. It is the money that the nation can dispose of. Personal disposable income क्या था? Which a household can dispose. उसके पास सारा टैक्स वैक्स देकर जो बचा कुचा पैसा है. National disposable income is what the nation can dispose of. जो नेशन के पास एंटायरली कितना पैसा. क्या नेशन को एज अ होल किसी को ऊपर टैक्स देना पड़ता है? नो. सो वी डोंट हैव टू सबट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. नेशनल डिस्पोजेबल इनकम सीधा हमें नेशनल इनकम से मिलेगा. नेशनल इनकम इन द फॉर्म ऑफ एनएनपी प्लस ट्रांसफर्स फ्रॉम द वर्ल्ड, ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट्स, in terms of donations, in terms of remittances, all of that added to the NNP gives us national disposable income. जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया होता है ना, वो एनएनपी में इंक्लूडेड होता है पहले. उसको हम कहते हैं द इनकम मेथड. मैं आऊंगा अभी उस पर. Transfers from rest of the world, that is part of NNP.
तो NNP plus transfers from rest of the world, for example gifts, donations, remittances, etc. हो गया? Now let's start another topic. Costs and prices of national income. Costs and prices of national income. Now see, suppose in India, I'm just giving you a production example. National income, let's assume for the sake of argument, I'm taking what? GDP. तो मुझे GDP लेना है. अब for GDP, I have to calculate the production in the domestic trade. So what I calculated was, India में we have produced 1 genes या 2 जीन प्रोड्यूस किया हमने, 2 जीन्स के हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किया. दैट इज द एंटायर प्रोडक्शन इन इंडिया. हाइपोथेटिकल एग्जांपल. अब आई हैव टू कैलकुलेट द मनी वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्शन. तो मनी वैल्यू कैसे मिलता है? यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, दैट विल गिव यू मनी वैल्यू. मनी वैल्यू ही आपका जीडीपी होता है. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय प्राइस. तो जैसे ही आपने प्राइस मल्टीप्लाई किया, मैंने आपको कहा कि ये जीन्स है, यू मल्टीप्लाई दिस जीन्स इनटू द प्राइस. सो व्हेन आई टोल्ड यू टू मल्टीप्लाई इट विद प्राइस, you stopped me and asked me which price. Why? Because this jeans is only rupees 200 at the factory level. This is something like 1200 at the retail level. So if you want to multiply the price, which price are you talking about? Are you talking about a factory level price or are you talking about the market price? तो आपको ये बताना पड़ेगा कौन सा price. So there are different costs and prices of national income. कोई नेशनल इनकम मेजर होता है किस पर? फैक्ट्री के लेवल पर. कोई नेशनल इनकम मेजर होता है मार्केट के लेवल पर. तो अब हम देखेंगे कौन कौन सा हमारे पास नेशनल इनकम का कॉस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस. Factor cost, basic price, market price. सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट, FC. FC now see, तो वी हैव जीन्स फॉर एग्जाम्पल. अब जीन्स का मुझे प्राइस लेना है एट द फैक्ट्री लेवल. तो आपने मुझे बोला सर टू प्रोड्यूस समथिंग यू नीड 4 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स. कोई भी प्रोडक्शन के लिए अपार्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल आपको 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स चाहिए. विदाउट दोज फैक्टर्स यू कैन नॉट प्रोड्यूस. एडुकेमी की बात ले लो. विदाउट दीज 4 फैक्टर्स एडुकेमी कैन नॉट प्रोड्यूस. सबसे पहले इज लैंड. इमेजिन कर लो ये जगह ही नहीं है, तो हम प्रोडक्शन कहां करेंगे? So the first thing you require is land. Second thing you require is labor. So Edukemy has to produce classes for UPSC. Without labor like teachers, you cannot produce. कौन produce करेगा जब तक labor नहीं होगा? Labor in this example are the teachers. Labor जरूरी है. उसके बाद कैपिटल, पैसा. तो आपने ये सेटअप किया, कैमरा सेटअप किया, कुर्सियां सेटअप की, रेंट दे रहे हैं इस जगह का, दैट बिकम्स कैपिटल. कैपिटल के बगैर प्रोडक्शन नहीं होता है. एंड फाइनली यू नीड शबीर सर, एंटरप्रेन्योर. शबीर सर नहीं होते तो एडुकेमी शुरू ही नहीं होता कभी. तो यू नीड समबडी हु इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, हु इज द बिजनेस ओनर. These are the 4 factors of production. आपको कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है, you need land, labor, capital, entrepreneur. ये 4 चीजें हैं. These 4 things are known as factors of production. Factors of production. Factors of production.
Nikita, you just have to assume it as GDP. All right. Land, labor, capital, and entrepreneur kya hai? These are the 4 factors of production. Now tell me, when you take land into consideration, suppose Edukemy has taken this space, this land. ये लैंड जिसका भी है, ये बिल्डिंग जिसकी भी है, वो इस जगह का क्या कमाता है? रेंट. So land has an income and that income is known as rent. लैंड रेंट कमाता है. लेबर क्या कमाता है? वेजेस. लेबर वेजेस कमाएगा. पैसा, what does money earn? Interest. And finally, what does the entrepreneur take? Profits. These 4 things are known as factor incomes. Factor incomes. Factor incomes. ठीक है जी? So to start the process of production, you need 4 factors of production and you also need factor incomes. Now pay attention. मुझे क्या प्रोड्यूस करना था? Jeans. Let's suppose jeans is ₹100. या अभी मत लिखो 100, बनाएंगे 100 इसको. To produce this jeans, I had to take some space. उस space में I had to give, let's suppose 20 rupees as rent. तो मैंने लैंड लिया, उस पर 20 रुपए की रेंट दे रहा हूं मैं. I employed some laborers. उसको मैं 30 रुपए की वेजेस दे रहा हूं to produce this jean for me. Then I also had to take some money from the bank. उस पर मैं 20 रुपीज का इंटरेस्ट दे रहा हूं. एंड फाइनली जो मैंने प्रॉफिट रखा है दैट इज 30. तो टोटल कितना हो गया एग्रीगेट इसका? 20 प्लस 30 हो गया 50, 70 एंड 100. दिस इज माय फैक्टर कॉस्ट. इसी को हम क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट. सो फैक्टर कॉस्ट क्या है? इट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स. It is the aggregate of all factor incomes. Aggregate of all factor incomes. When you take the aggregate of all factor incomes, that becomes a factor cost. Can I simply say that it is the cost, this 100 rupees is the cost of the commodity from the producer's side? जो प्रोड्यूसर है जिसने ये बनाया है, ये उसका कॉस्ट है 100 का. वो कहता है कि मैं 100 में बेचूंगा इसको, राइट? सो फैक्टर कॉस्ट इज नथिंग, इट इज द कॉस्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स साइड. कॉस्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड. प्रोड्यूसर साइड का कॉस्ट. Is it clear? That is your factor cost. Second, we have basic price. Basic price. Basic price. Pay attention. Now see, this is a factory. अब जैसे तैसे करके I produce this jeans for ₹100. Does this ₹100 include my profits? 100 rupees में प्रॉफिट इंक्लूडेड है ना? 4 फैक्टर इनकम है ना? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. I have already included my profit into this 100 rupees. Now it's ready to be sold. मैं इसको बेचने के लिए तैयार हूं. But I will not sell it at ₹100. Why? Because while I was producing this commodity, I had to pay some taxes to the government. Government को मैंने कुछ tax pay किया है. So why would I pay that money? These taxes have to be ultimately paid by the consumer. मैं क्यों दूं उसका पैसा? So what I'll do is, 100 rupee is the aggregate of factor income. That means it includes rent, wages, interest and profits. But as of yet, it does not include any taxes, because I have given some taxes on my production, whatever I was producing. So such kind of tax is known as production tax.
क्या है? प्रोडक्शन टैक्स दैट इज गिवन टू द गवर्नमेंट. वुड आई एड दिस प्रोडक्शन टैक्स टू द फैक्टर कॉस्ट बिफोर आई सेल इट? क्या मुझे इसको ऐड करना चाहिए? नहीं. आप जब बेचते हो, आप जब दुकानदार के पास जाते हो, उसको बोलते हो आई नीड लेट्स सपोज अ पिज्जा, वो उसमें टैक्सेस ऐड करके देता है आपको? यस. अल्टीमेटली टैक्सेस आर पेड बाय हुम? फाइनल कंज्यूमर. व्हाई वुड ही पे द टैक्सेस? आपके खाने पर वो क्यों टैक्स पेगा? तो ये जो खरीदेगा उसी को देना है. सो व्हाट हैपेंस इज, इसका अपना प्रॉफिट तो है, बट ही विल आल्सो ऐड व्हाट? द टैक्स ही हैज गिवन टू द गवर्नमेंट. सो व्हाट ही विल ऐड इज प्रोडक्शन टैक्स. प्रोडक्शन टैक्स. प्रोडक्शन टैक्स क्या है? विच इज लेवीड ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. Which is levied on the process of production, like registration tax. Registration tax. ये टैक्स प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है. And this tax has to be added. But sometimes government takes the tax from you. But if you are doing a favorable production, ऐसी production आप कर रहे हो which is encouraged by the government, कि ऐसी production होनी चाहिए. In that process, government will give you some money in the form of subsidies. Government will tell you कि आप करिए, ये production करो आप, we'll provide you subsidy. So this subsidy is known as production subsidy. क्या बोलेंगे इसको? Production subsidy. That is given on the process of production. तो बताइए, सब्सिडी जो मिला, इज दिस मनी गिवन बाय द प्रोड्यूसर और टेकन बाय द प्रोड्यूसर? टेकन बाय द प्रोड्यूसर. विल इट बी एडेड टू द फैक्टर कॉस्ट और सब्ट्रैक्टेड टू द फैक्टर कॉस्ट? सब्ट्रैक्टेड टू द फैक्टर कॉस्ट. प्रोडक्शन सब्सिडी. प्रोडक्शन सब्सिडी. तो व्हाट हैव डन? फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी गिव्स मी बेसिक प्राइस. Gives me basic price. Gives me basic price. Basic price. Now tell me, can I say that this producer, when he produced this commodity at 100, he is not expecting 100 rupees from the consumer? No. He will add production tax to it, then he will subtract production subsidy. The final price of the product is basic price. अब ये basic price पर बेचेगा इसको. And this is the price which the producer is expecting from the company. Right down. Basic price is the value which a producer is the value which the producer expects to receive from the consumer, which the producer expects to receive from the consumer by selling his unit of production. By selling his unit of production. That becomes basic price. Now factor cost पे तैयार हुआ, but you add production tax to it, subtract production subsidy, it becomes, अब ये तैयार है निकलने के लिए. ठीक है? Now it can be sold at basic price. Finally you have basic price के बाद market price. मार्केट प्राइस. तो मार्केट प्राइस क्या है? यू नाउ टेक द बेसिक प्राइस. टेल मी, बेसिक प्राइस पर आपने फैक्ट्री से लाया वो, तो दिस इज द फैक्ट्री जिसने प्रोड्यूस किस पे किया? फैक्टर कॉस्ट पे, प्लस सब्ट्रैक्टेड समथिंग, एंड नाउ द प्रोडक्ट इज एट बेसिक प्राइस. नाउ इट विल, do we directly go to the factory to purchase it from the factory, the products? No, we purchase it from the shops, retail market. तो होगा ये
that these shop owners will go to the factory and purchase it at the basic price and then sell it at the market price. Now, how do you go from basic price to the market price? Apart from the value that you have added, मान के चलिए प्रॉफिट जो आप ऐड करते हैं वो तो करना ही करना है, पर बेसिक से मार्केट प्राइस में कैसे जाते हैं? जब आप बेसिक प्राइस पे खरीद कर मार्केट प्राइस पे बेचते हैं, you add one more tax, we call it product tax, like GST. अब GST ऐड करना पड़ेगा इसमें, आपको ये सीधा बेसिक प्राइस पे नहीं मिलेगा, you have to add some tax again. But now this tax is not a production tax, it is a product tax. Production tax is levied on the process of production. Product tax is levied on the product itself. ये प्रोडक्ट पे लगता है, जितने प्रोडक्ट होंगे उतना टैक्स, समझ रहे आप? Like GST is a product tax, but you also get some subsidy. जैसे आप we have these public distribution shops, fair price shops, वहां से you get rice. If you are a BPL, you get 2 rupees per kg price. You are getting per kg subsidy on that commodity. So that is the product subsidy. So we will subtract product subsidy. So basic price say we added product tax and we subtracted product subsidy, and what we get is market price. So in simply it is market price is equal to basic price plus product tax minus product subsidy. सब पे नहीं मिलती है, जिसमें होगी उसमें सब करना है, सब पे कहां मिलेगी? That is already added in the logistical cost. पर ये है टैक्सेस और सब्सिडीज को कैसे एडजस्ट करना है. नाउ सी, आपको दो इक्वेशंस मिल गई. एक आपको मिल गया फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल, सॉरी, बेसिक प्राइस इज इक्वल फैक्टर कॉस्ट प्लस production tax minus production subsidy, and then you got market price. Can you combine the two and tell me how do we calculate market price from factor cost? आप निकाल के दे सकते हैं. Combine the two equations and tell me how do we calculate market price from factor cost? Is it correct? ऐसे लिख सकते हैं. मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है? मार्केट प्राइस इज इक्वल बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी. तो आई सब्स्टिट्यूटेड बेसिक प्राइस विद दिस, क्योंकि आपका बेसिक प्राइस, फिर ये आपका रिमेनिंग है ना. नाउ सी, this entire thing here is known as net indirect taxes. Net indirect taxes. So when you go to the book and you study the book, you simply get market price is equal to factor cost plus NIT. Simple. Market price is equal to factor cost plus NIT. Clear है? So these are your factor costs, basic price and market price. Now your GDP can be at factor cost, it can be at basic price, it can be at market price. तीनों जगह पर हो सकता है. So these are your costs.
ना सी ये तो हो गया आपका एक costs, factor cost, basic price, market price. The second thing that we'll cover tomorrow is current and constant price. Current and constant price. ये कल करेंगे. Market prices, retail price, consumer का price. ये पॉइंट ऐड कर लो प्लीज. मार्केट प्राइस इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम द कंज्यूमर्स साइड. इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम द कंज्यूमर्स साइड. Price of the commodity from the consumer's side. Which one? Last slide. Last slide. Yeah. Company is exempted from the tax payment. If the company, Exempted from tax payment. so don't add the taxes then. ठीक है. If you are exempted, then don't add the taxes. And if there is no subsidy, then don't subtract the subsidy. It is only done in a case जहां पर टैक्स दिया जाता है, जहां पे सब्सिडी ली जाती है. If there is no tax, no subsidy, then don't add anything. All right, thank you so much. The domain of the question comes from the section that part would be covered tomorrow when we cover the growth trends. All right. Thank you. Bye.